Hello, welcome back to another session of Grey Beyond Narratives. Today's topic is also about Israel and Palestine. The latest about in the issue is that the Secretary of State Antony Blinken of USA have arrived in Israel to show their support for the country, while President Biden have warned that a new Israeli occupation of Gaza would be a big mistake. He said he believes that Hamas militant group must be eliminated, but there should be a path to a Palestinian state, amid warning from top US official that the war between Israel and Hamas could escalate. As the humanitarian crisis in Gaza has reached critical level, about 600,000 people have been displaced from the north of the enclave, and food and water supply in Gaza are dangerously low, and hospitals there will run out of fuel within 24 hours. These reports have been given by the UN Office of the Coordination of Humanitarian Affairs. US Health Agency is rushing medical supplies to Lebanon. A Reuters cameraman has been killed, and six other journalists are injured near Lebanon's southern border, while two journalists with Reuters, two with Al Jazeera, and two with Agence France-Presse were also injured. Five Palestinian journalists killed, two journalists are missing. Next is Israel have also denied that the Rafah crossing between Egypt and Gaza will be opened in to allow dual nationals to get out of the Gaza Strip. But Israel and Hamas both have denied that, and they have both denied the ceasefire. So they are pretty much stuck there. And Gaza Health Ministry have reported that more than 3,000 Palestinians have been killed so far, and making it the deadliest of the all five Gaza war. Israeli civilian has been killed due to the firing. From Lebanon, Hezbollah have also joined the fight, and Israel have asked the neighboring villages with Lebanon to evacuate while there is a whole bombing situation happening between Hezbollah and Israel. So that is the latest. It is getting more serious with each second. Another thing that's been noticed, I've personally noticed it as well, that social media is playing a big role in this whole conflict. There are TikTokers, there are social media artists, and Twitter, and all these things are playing a huge role in this conflict. And people are actually seeing the side which the media, you can say the media do not want to show. But yeah, there's a lot of information out there, and everybody's like really, well, not everybody's on the same side. Everybody's really war with each other, and there are protests going on in London, and Argentina is in complete support of Israel, while there are protests in London and Pakistan and Europe and the US. So this is all that has been happening till now. Now we have our old speakers along with some new ones. We have Neema Ji, we have Andolan, and all the other older speakers, Shaji, Sid, Furkan Bhai, Karan Bhai, and Aditya. Uh, okay, Shaji, over to you, please. Uh, Thank you very much. I think you've reiterated most of what's happened, and I think in regards to uh, what has been developing, I think today we have panelists from with different perspectives, pro-Palestinian as well as people who might have alternative view, just like last time. And I think we should look beyond taking sides. And maybe today we can concentrate on some facts and what or maybe look at also what is happening in regards to the humanitarian crisis, legalities of some of these issues, which have been occurring. So
I think you've portrayed and outlined majority of those things, and as we progress, we'll go further into those things. So, Naimaji, I'm going to pass the microphone to you in particular in regards to like what's happened in the last 6 days in terms of casualties, and in from the main question today is going to be from the perspective whether it's from the Israeli Jewish side or Muslim Palestinian side, and what Hamas has done, uh, what the effect and the humanitarian casualties are basically witnessing are occurring on both sides. And what is happening, and it's almost like different countries or different authorities around the globe are picking one over the other rather than seeing that both sides can have drawbacks, both sides can be wrong in certain situations, certain actions cannot be condoned, whether they're taken by the Israeli authorities or so-called representatives of the Palestine movement, the Hamas terrorist organization, as I think majority of the countries are classified, apart from Russia and a handful others. Go ahead, Naimaji, and then we can like move to another. जी thanks Shaji. The first point which I want to make here, देखिए, we have crossed that point where you have to condone or condemn these attacks, whether it is done by Palestinian or Hamas or this Israeli army. इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं, आप उसको अगर एनालाइज करोगे फ्रॉम अ लेमैन, जिसको ना इजराइल के साथ कोई कनेक्शन है, ना तो फलस्तीन के साथ कोई कनेक्शन है, एज एन इंडिपेंडेंट अगर आप देखेंगे, जिस तरह से भाई हमास ने अटैक किया, यस, इट हैज डन अ बिग ब्लंडर, इट हैज कमिटेड अ बिग ब्लंडर, लेकिन अब जिस तरह से आप वहां पे बरस पड़े हो, बिकॉज यू नो you can't go in the Gaza because you have to find these Hamas people. Yes, definitely Israel is saying कि भाई वहाँ पे जो population है, it's very difficult to find them. I mean within this densely populated area. लेकिन अब आप अगर ये इसका solution दे रहे हैं कि you are going to kick out the whole population from here and then you are going to find them in the houses. आपको क्या लग रहा है कि दिस टाइप ऑफ जो इन्होंने ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन बताया है कि भाई यहाँ से पॉपुलेशन आप निकल जाएं और उसके बाद से ये घरों में जाएंगे, तो क्या वो हमास के जो लोग हैं, डू यू थिंक दे विल स्टे इन गाजा? डू यू थिंक दे विल नॉट गो विद दीज पीपल जो वहाँ से रेफ्यूजी बन के निकल रहे हैं? सो दैट्स वन पॉइंट. और दूसरा ये जो कह रहे हैं इन्होंने, एक और जो इस वक्त एलिगेशन चल रही पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे, दैट दे हैव डग टनल्स देयर एंड देयर आर सो मेनी टनल्स एंड दे आर लिविंग अंडरग्राउंड. लेकिन क्या हमास के कितने लोग हैं जो अंडरग्राउंड हैं और जो इस वक्त एक्शन में हैं, जो उन्होंने एक्शन की है? क्या इसका कहीं पे कोई फिगर है? क्या इसके बारे में पता है? 3-4 लीडरों के जो नाम आ रहे हैं इन द मीडिया, and otherwise we don't know anything about these Hamas. They are people, I think. क्योंकि अगर आप लेबल कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, पहले तो मैं समझती हूँ कि Hamas is representing people there and Hamas is Palestine, Palestine is Hamas. अब अगर आप अलग से कर रहे हो कि Fatah is representing this Palestine, ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर हो रहा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि ये इनको रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड देम टेररिस्ट्स. तो ये दूसरा जो है इंटरनेशनल मीडिया पे जो पॉइंट है. तीसरा जो हमेशा से ये हो रहा है कि भाई Muslims, mostly Muslims and the Muslim organizations and Muslim countries, why they are not condemning Hamas? भाई कैसे करेंगे कंडेम? क्या आपने फॉर द लास्ट 15 years जो सीज आपने किया है and the killings and the massacres which have been done for the last 15-16 years, क्या किसी वेस्टर्न कंट्री ने उसको कंडेम किया है?
And is there any Western country which has come to the rescue of these Palestinians who are dying every moment of the day? ये तीसरा पॉइंट है. अब आप चौथा पॉइंट ये है कि भाई जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है और जो आप देख रहे हैं कि ब्लिंकन का मुस्लिम मुल्कों में जाना, देन इसराइल जाना, वहाँ जाना, लेकिन आई थिंक कि ये मसला हल नहीं हो रहा है बिकॉज देयर आर 2-3 डिमांड्स. नंबर 1 मुस्लिम मुल्कों का है कि भाई देयर शुड बी सीज फायर, दिस एयर स्ट्राइक शुड बी स्टॉप्ड, जो इसराइल नहीं कर रहा है. और इसराइल की ये इसराइल का स्टैंड जो है वो ये है कि भाई these people who have been become hostages there, who have been made hostages, they should be released. लेकिन उसमें जो कतर का रोल इस वक्त प्ले कर रहा है, लेकिन कतर की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि कतर भी कह रहा है कि भाई तभी तो हम मीडिएशन करेंगे, मिलेंगे, जब वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगे. Where do you think we should go? Because if you think Hamas is living within the population of Gaza, then we have to go to the Gaza and we have to be there and we have to talk to them. क्योंकि जो आपके कतर में लीडर हैं इनके इस्माइल हानिया वगैरह, तो उनका कितना इस वक्त कनेक्शन है उनके साथ, जो अगर आप समझते हैं वो अंडरग्राउंड है. तो यहाँ पे भी ये पॉइंट आई मीन लटका हुआ है कि भाई आप कैसे रिलीज करेंगे. इसीलिए इन्होंने आपने देखा होगा कि जो ये ग्राउंड अटैक करने वाले थे उसको इन्होंने डिले भी किया, इसी वजह से कि खुद अमेरिकी इनको कह रहे हैं कि भाई अगर आपने ग्राउंड पे जाके हमला किया एंड यू आर स्टक देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आपने, मुझे नहीं पता, आपने जनरल पैट्रियस का बयान अभी सुना है. रिसेंटली ही वाज इन लंदन एंड ही स्पोक अबाउट दिस वार मेंटालिटी एंड अर्बन वॉर, आई मीन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कहता हूँ कि जो भी अर्बन ये वॉरफेयर में फंस गया वो फंस गया हमेशा से, एंड वी विल बी स्टक. बिकॉज ही हैज गिवन एग्जांपल, आप जब वो इराक में बगदाद में जब गए थे एक इलाके में, और वहाँ पे वो कहते हैं कि वी गॉट स्टक देयर फॉर 10-15 years and we couldn't get out of it, although we were happy that we have, I mean, declared this area as a part of a green zone. तो ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे ये मसला अटका हुआ है. अब मुझे लग रहा है कि डिप्लोमेसी भी इस वक्त जो है एट दिस पॉइंट वो पहुंची है कि जहाँ पे ब्लिंकन की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि डिप्लोमेसी हैज फेल्ड अंटिल नाउ बिकॉज देयर आर नो रिजल्ट्स. इजराइल एक तरफ से नहीं मान रहा है कि उसको ग्राउंड अटैक नहीं करना है, दूसरी तरफ से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि until there is a ceasefire nothing is going to happen and we are not going to do anything. So I think यहाँ पे जो पहुंचा है it's a stalemate and ये जो strikes हैं ये भी जारी हैं, गाजन्स भी मर रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं. And I mean the stand, we know, we have already spoken about it, Western and the Muslim countries, it is totally different stand and it has done this huge polarization in the society, whole society, जो हम देख भी रहे हैं कि अभी जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, रैलीज भी हो रहे हैं, and then you see the red line between two and that's obvious. I mean everybody understands what's happening there. Thank you, Naima ji, for your comments. I think we should go round with other speakers. Karan, if you have any remarks, opening remarks, please go ahead. Oh yeah, thank you very much, yaar. Aapka, I agree, like this lady said, कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, people those experiencing the situation, they उनको पेन पता है कि क्या पेन है. जो लोग बाहर, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो टोटली डिपेंड है, लाइक न्यूज़ एंड सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, फॉर अस इज अ डिफरेंट थिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. इफ यू आस्क मी इसको रोकना कैसे है, आई डोंट हैव एनी क्लू बिकॉज आई होल्ड नो पावर एंड मेरी ओपिनियन क्या होगी, मैं तो ये कहूँगा कि पीपल शुड लिव इन पीस, in harmony, and look after their, like, family and everything and move forward. अब एक कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग कहाँ से होती है एंड व्हाई पीपल वांट टू किल. मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी होती है
वो ये है कि लोग अगर इतने ही समझदार थे या समझदार हैं, तो फिर लोगों को मारने की या गुलाम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? On the other one hand, we claim we were intelligent and we were smart and we, best ideology or best system we have. On the other hand, we have to make people slave and we have to kill people. अगर इंटेलिजेंट लोग होते तो फिर वी वुड हैव हम अपने कॉन्फ्लिक्ट बातचीत करके खत्म कर लेते। तो काफ़ी इट्स लाइक काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक काफ़ी इसमें इनपुट्स हैं। अब तो ये मैंने जहाँ तक सुना है, अब तो ये ग्लोबल बन गया है, लाइक लॉट्स अदर पावर्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन देयर, लाइक चाइना, अमेरिका, like Iran always there, and ये तो अब आई होप कि कहीं पे वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, लाइक वेयर आई होप वी नॉट मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो आई होप कि उससे पहले इसका कोई उपाय सोल्यूशन ढूंढे, देन ब्रिंग देयर इज ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, जैसे वो यूक्रेन और रशिया का है, अब ये हो गया है, अजरबैजान और अर्मेनिया का चल रहा है, देन इन साउथ एशिया लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर आप लिंक दे दें यार, लाइक सम Jhaji asking for the link if you can please, or shall I share my one if you allow? Oh, thank you, जी Greg. जी जी Yes, go ahead. You can share yours. Thank you, thank you, That's thank not a you. problem. आप करें share. जी, थैंक यू करण। आई थिंक we have Arslan. Arslan, if you would like to make your initial comments. अस्सलाम वालेकुम। यार इस पर जो है मतलब बात वही है कि जो एक आध दिन से ही बात हो रही है कि जैसा मतलब ये कि अभी शायद करण ने भी कहा कि आई जस्ट होप, और मतलब डेफिनेटली नईमा की बातों से मैं एग्री बहुत ज़्यादा किया है। बात वही यही है यार कि ये अब मसला जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए जा रहा है, ठीक है? ये एक बात जो मतलब पुराने जो रेट्रिक्स चलाए गए हैं ना कि अरे यार अपना हम क्या कहते हैं, हमास ने हमला कर दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, ठीक है ना? बात यही है कि इस वक़्त जो है जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि एक उन्होंने एक टाइम ऐसा उन्होंने उठाया है, कहा कि यार अपना उन्होंने लैंड वापस लेने के लिए, जिसमें ये हुआ कि देखें हर साल ये लोग कुछ ना कुछ वहाँ पर वो करते ही रहते हैं उधर, और वो भी रमज़ान में करते रहते हैं वहाँ पर, ये मस्जिद अक़सा में। और इस दफ़ा भी मतलब उन्होंने जो थ्रेट्स दी आके रमज़ान में ही दी मस्जिद अक़सा में आके, उन्होंने कहा कि हमने इसके रिटेलिएशन में लड़ाई की है, हमने इसके रिटेलिएशन में हमने जो ना कहते हैं वो हमला किया है। मुझे जो एक मेन बात जो यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये हो रही है कि यार अब इन कुछ सालों में इसराइल अपने कहते हैं अरब ममालिक के साथ हालात अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी मेन वजह ये भी है कि देखें, एक बात है, यूएस में उसको अब वैसे अब सपोर्ट हर वक़्त नहीं कर सकता। फ्रॉम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव मैं कह रहा हूँ। हर साल जो है 5 बिलियन 6 बिलियन उठाकर ऐसे देना अब आसान नहीं रहा है। लोग सवाल पूछने लग गए हैं। इवन जो मतलब जो द मोस्ट प्रो इसराइली जो लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ओके यार ठीक है, आप सपोर्ट करें लेकिन इन्हें बेच कर करें, ना कि ये कि आप इन्हें ऐसे फ्री में करके करें। ये बात है। तो मतलब ये कि वो इसलिए मतलब ये कि एटलीस्ट ये हो रहा है कि एटलीस्ट हॉस्टिलिटी करीब-करीब ना हो, ये वाला मामला हो, ये वो। अभी ये है कि इसके बाद एक मामला फिर से एक वो स्टार्ट हो गया है कि यार ओके, यार ये तो मतलब बड़ा ही अटैक कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पर जो इन ममालिक की अवाम है वो फिर से एक गुस्से में आ गई है। और अगेन मतलब ये चाहे जितनी भी डिक्टेटरशिप्स हों, ये चाहे कितना ही लोगों को अपने कंट्रोल में रखती हों, लेकिन वो तब भी ये नहीं चाहेंगे कि अवाम किसी बात पर यूनाइट हो, किसी बात पे खड़े हों। तो अगेन ये मतलब ये मामला एक थोड़ा-सा एक्सपोज़ करने वाला मामला था, इसलिए जो मतलब सऊदी अरब और इसराइल की जो बातें होती जो चल रही थी, वो पीछे फिर चली गई हैं। इवन जो अपना ये जो आपका यूएई का जो अकॉर्ड है वो कायम है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है कि अब एक फिर से क्वेश्चन लग गया है कि यार क्या कहते हैं इसका फ़ायदा था क्या? क्या फ़ायदा हुआ? हम ही बल्कि बुरे बन रहे हैं। तो आई थिंक यार ये जो अभी जो हुआ है, ये इसमें इस वक़्त जो है ना इसराइल वो वाली जंग बहुत बुरी वाली हार रहा है। क्या कहते हैं
कि ये जो प्रोपेगेंडा की जो जंग जो हर साल वो जीता करता था ना, वो इस साल मुझे लग रहा है कि वो हार रहा है, मतलब कंपेयर टू वो। अब वो अपनी अभी भी बॉम्बिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है बेचारे, मतलब लोग बेचारे आम लोग ही शहीद हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, एटलीस्ट अब ये है कि लोग ओपनली बोल रहे हैं, जो ये पहले जो मतलब ये ठीक है, पिछले कुछ सालों से लोग फाइनली बोलने लग गए थे, लेकिन इस साल ज़्यादा बोल रहे हैं। इस साल इतने प्रो इसराइल लोगों की इतनी वो वैल्यू नहीं है, तो अब एक बात ये हो रही है कि न यहाँ पर अब यूएस डेफ़िनेटली और चाहे दूसरे ममालिक हैं, वो चाहेंगे कि अपना वो करवा दें, कि सीज़ फायर करवा दें, लेकिन अब उनको भी पता है कि यार दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड दिस वे। अब इन लोगों को चेंज करने की ज़रूरत होगी, अब कोई ना कोई सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन पे आने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि अभी हो रहा है, बट लेट्स सी, मतलब मामला आई स्टिल थिंक बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी कुछ नहीं पता क्या कहा जा सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दैट्स ऑल आई गोटा से। Thank you, Ruslan. I think we'll move to Vivek Khatri, Andolan. Please go ahead with your remarks and initial statement. Can I come after 2 minutes if we can go to any other speaker, and Yeah, then yeah, I'll come yeah, just yeah, right after. yeah. No problem, Andolan ji. Aditya, I know your internet connection is a bit jittery. आप हो इधर? We can't hear you. So I think I'll go to Shaji. Shaji, I think we have seen, and then I think Medusa also highlighted the current situation, जो कि humanitarian crisis एक develop हो रहा है in Palestine. Is it justified? Uh, I know on 7th what happened in Israel, Hamas, casualties civilians की हुई थी. But is the response justified and proportionate response is something आज मैं एक जगह सुन रहा था, it was probably some UK news media. Uh, they basically use this term whenever they're talking about Israel response to इस तरह के जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं विद हमास. तो इस पे आप क्या कहोगे शाह जी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा बिफोर वी गेट इनटू द डीपर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और वो ये है कि इफ़ यू नोटिस ऑल दोज पीपल हु आर जस्टिफाइंग फॉर ईच साइड, आपको नज़र ये आता है कि दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट एट हैंड. अमेरिकन्स के अंदर you can see why they're basically portraying that either say not many people know कि they were all after what is known as the Abrahamic Accord. अभी सऊदी अरेबिया के साथ वो करवा रहे थे इनका पूरा negotiation एक बकायदा हिजाज रेलवे के नाम से all the way up from Israel to Nayom city तक एक रेलवे लाइन बन रही थी. Now all that has come into a huge disaster. दूसरी साइड के ऊपर what the Russians were doing, again that was disastrous for them. So obviously when you look at them backed by the evangelical Christians, वो तो outrightly इस वक्त इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर हम यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं तो अगेन दोनों जो मेजर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो लेबर है या वो आपकी कंजर्वेटिव हैं, देयर बोथ उनकी जो लीडरशिप है दे आर बेसिकली अगेन supporting Israel out here. I think we lost Shaji. There might be some connection issues. Andolan ji, are you back? Yeah. जी, So- तो चले Andolan ji, please go ahead. Arsenal. Sorry, can I? I'm probably not speaking your name correctly, but please don't mind that. ने एक बड़ा स्पेसिफिक इशू रेस करा है. एंड शाजी से मेरी इसके बारे में बात हो रही थी करीबन 1 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में. शाजी वाज क्वाइट अपबीट दैट मिडिल ईस्ट इज फाइनली putting its peace with Israel, and Pakistan may also sign Abraham Accords, and
so on and so forth. And, we would be released of one tension from the West, and then we can entirely focus on, our problems in the East. And I told him at that particular point of time that you can't change the basic nature, of people. And this conflict is far from over, right? And what Hamas just did, under whosoever's pressure or instigation, is something what ISIS did the mistake. What happens is, if you remember the initial days of ISIS, also there was broad-based support for ISIS. That since US has destroyed Iraq and bombed Syria and caused unrest in the Middle East, and hence these guys are fighters and they are freedom fighters or whatever. A lot of support across the globe, at least in the Ummah. But when the same set of people went ahead and took women as sex slaves, yes, the women destroyed the population en masse. The global opinion changed, and even the Muslims across the globe cut them loose. Right? People clearly articulated that these guys are not Muslims. We have got nothing to do with them. Screw them. I think Hamas has also entered into that sphere. I repeat this, even at the cost of, getting some ire from my, Muslim friends. But, very recently I said none of the Islamic campaigns are complete without harassing women. And, Hamas just did precisely this in Israel. Right? In a war, in a conflict, people understand that war and conflict happens is the time there is humanity. Right? What people do not, anticipate or accept that you go on raping women, right? Killing babies is one part of thing that both the parties are accusing each other of. But I think the crucial factor out here, which is what I don't agree with Arslan, is the global opinion about this war because of this rapes of women in Israel on last Saturday. I think you have lost a lot of friends or a lot of sympathizers for Palestine. India being one of them, and UAE being another. So India traditionally, whether it is all the UN votings or whether when it came to rights of Palestinians, was standing with Palestine since a very long time. So was UAE. But this particular terror act, and somewhere we have to as civilized society accept the fact that the political narrative should not be allowed to be built on dead bodies of women and children. Right? Political narrative is one thing, but what Hamas tried to do is brought in this political discussion on the dead bodies of lot of women, children, elderly people. And somewhere as civilized society, people have not accepted this. Yes, there are a lot of people sympathize with Palestinian cause. There's no harm in sympathizing with Palestinian cause. But I think we need to differentiate a terror attack vis-a-vis a political discussion. This is not a time for a political discussion. This is a time for tackling terrorism. So those are my opening remarks. I'll probably, we'll be discussing more. We can go to another guest as well. Thank you, Andolanji. Although I have a lot of disagreements with a lot of things that you said, but I'll move on to Rupesh Jha. Rupesh Jha, thank you for joining the panel. If you have any opening statements, please go ahead. I would like to point some of the causes which had led to this attack. I want to tell you that Hamas leadership has appropriated funds which were for the welfare of people of Palestinian territory. So they are now doing this so that everything is destroyed, and then they can go around with their begging balls asking for money to Europe. And you just see who is funding the Palestinian authorities. It is mostly European Union, and we are giving them money, and then they want everything destroyed, and then they will again appropriate money from those funds. And Hamas leadership, which includes a certain figure, very they have that Elad,
he had taken money, and it is in his interest. And second, if you want the raid and bombing to stop, the first thing that should be done is unconditional surrender. Offer to give back all the hostages and bring out all those killers and attackers who were involved in these activities for trial in the international court and tribunal. Because now not only Israelis have been killed, but people from many countries have been killed. I give you a total call. It is like United States 27 dead, others abducted, missing. Thailand 24 dead, 16 hostages. France 15 dead, many missing. Nepal 10 dead. Argentina 7 dead. Ukraine 7 dead. Russia 4 dead. UK 4 dead, Chile 4 dead, Austria 3 dead, Belarus 3 dead, Canada 3 dead, China 3 dead, Philippines 3 dead, Brazil 3 dead, Peru 2 dead, Romania 2 dead, Australia 1 dead, Azerbaijan 1 dead, Cambodia 1 dead, Ireland 1 dead, Portugal 1 dead, Spain 1 dead, Switzerland 1 dead, Turkey 1 dead, Germany several hostages. This is the present situation. If they are not going to release the hostages, then they deserve what they are getting. And all the things that were made for Palestinian territories people, like pipes and other things, they have used those monies and those pipes to build missiles. So somebody has to be held accountable, and it has to be Hamas. If you can't bring, or if they are not willing to total surrender, like Germany was made to do while Dresden bombing, Japan was made to do with Hiroshima and Nagasaki, then it's everything is fair in love and war. If you don't surrender, fine. Then that's no blame. You start the game, and then the rock has started rolling, and it will go its own way. Thank you, sir, everybody, for listening. Thank you, Rupesh. Shaji, are you back? Am I We audible? Yes, you are. Okay, thank you very much. Yes, you are audible. Sorry about that. I had a mishap, but anyhow, in terms of internet connection. But I heard the last part of what Rupesh was saying, and it's ironic. That's exactly the kind of conversation which I was highlighting. That especially when it comes to the common man, when you hear things like 13,000 Israelis killed, 3,300 Israeli injured, right? Round about 2,500 Palestinians dead, and their prime minister Netanyahu basically suggesting that this is just the beginning, right? Benjamin Netanyahu just on Twitter 2 days ago, when the strikes began, and he expects round about 2 million odd people to leave that area somehow. And leave where? Are they letting them into Israel? Nope. Is Egypt letting them through? Nope. So the fact of the matter is, when we being common people ourselves, it's like I don't understand how we can condone all the entire death toll in terms of what is occurring, what has already occurred in Israel, and what is occurring as we speak right now in Palestine. This can be a situation, इसको क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं. मुझे गवर्नमेंट्स की तो फिर भी समझ में आती है कि वो जब इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, उन्होंने 100 और चीज़ें देखनी होती हैं. बट वी हैव टू रिमेंबर, इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है. इसके अंदर बेबीज दोनों साइड पे मर रहे हैं, लोग दोनों साइड पे मर रहे हैं, एडोलेसेंट्स की, मैच्योर लोगों की, elderly लोगों की. People who have nothing to do with any of these quantums are dying on a daily basis. अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें, एक डच ऑर्गेनाइजेशन है पैप्स के नाम से, जिसने पीस ऑफ गाजा के नाम पे 2329 कार्ड एक 2329 से लेके एक एस्टिमेट दिया है अभी like I think अभी 48 hours भी नहीं हुए, and they're expecting that to rise to 9,714 by the end of this week. This is just an estimate.
is based upon the people who are wounded. अब जब हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और फिर हम सोचते ही हैं कि we're talking about a group of people, जब इज़राइल बन रहा था, I understand कि वो इन बेसिस के ऊपर बना था कि the Jews were slaughtered, but at the same time उसी टाइम के ऊपर जनीवा कन्वेंशन को जिसका सिग्नेटरी आपको इज़राइल खुद भी नज़र आता है, ठीक है, it is obligated to provide for the rights of people who are residing in its apartheid state. अगर हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे इतना पैशनेटली एक आम इंसान इस बारे में किस तरह बात कर सकता है। ठीक है, हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे जब इश्यूज़ उठाते हैं तो इट मेक सेंस। अगर हम ये बात करते हैं कि पॉलिटिकली फलानी कंट्री या वो वाली कंट्री जो है उसका इंटरेस्ट उस दूसरी को सुपरसीड कर रहा है, इट मेक्स सेंस। लेकिन जब हम पैशन के साथ कहते हैं कि सर्टेन पीपल नीड टू बी एलिमिनेटेड, सर्टेन पीपल नीड टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, ये एक साइड के साथ दूसरी साइड के ऊपर बड़ा अच्छा हो रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जब आम इंसान इस टाइप की चीज़ों को सपोर्ट करने लग जाएं, दैट मीन्स that we are headed in a world which is... Shaji, we can't hear you. You can't hear me? No, we No, can. he's audible. नहीं, he's audible. Yeah. No, आवाज तो आ रही है, it's clear. जी। तो मुझे ये लगता है कि जब एक आम इंसान इतना पैशनेटली हेट को बाय इन करता है दोनों साइड में, कोई भी साइड के ऊपर, तो उसका रिजल्टेंट आम सोसाइटी के लिए कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो इतना ही मैं अभी फिलहाल के लिए कहूँगा। If somebody else has to I add have something, something to say. उसमें एक बात ऐड करनी है शाहजी, आपने बड़ी अच्छी इस वक्त बात कही and I completely agree with you, but लेकिन एक बात मैं कुछ वक्त से नोटिस कर रहा हूँ, especially like I mean you know after internet we all know that the world is globalized. मैंने इतने पैशन के साथ इसराइल को सपोर्ट करते हुए, ठीक है ना, अमेरिकन ज्यूज को भी नहीं देखा, जो कि क्या कहते हैं, जिनके पास फैक्ट्स हैं, जिनके पास फिगर्स हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि अमेरिकन ज्यूज के लिए इसराइल वैसे ही है जैसे एक मुस्लिम के लिए कुरान है, क्योंकि उनके जैसे हम लोगों को कुरान से मोहब्बत बचपन से पैदा की जाती है, उसी तरह से उनके लिए है, चाहे वो कितना ही मतलब उसको इवन नफरत भी हो रही हो ना, कहते हैं अपार्थाइड से कुछ से, लेकिन वो ये कहेगा एटलीस्ट इसराइल शुड एग्जिस्ट, मतलब वो उनको भी मैंने इतने पैशनेटली नहीं क्या कहते हैं देखा, क्या कहते हैं इसराइल के लड़ते हुए जितने मैंने हिंदुत्व को देखा। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी और मतलब बड़ी अजीब बात ये सोचने की होती है कि एक हिंदुत्व में और एक ज्यू में कोई बात कॉमन नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो बातें वो मुस्लिम से की नफरत करते हैं वो सारी बातें ज्यूज में है, इंक्लूडिंग द वर्ड दे कॉल अस कटवा, वो भी ये काम करते हैं, बल्कि टेक्निकल देखा जाए तो उन्हीं की मतलब शरीयत हमारे पास फॉलो होती हुई आई है और इसलिए हम लोग सर्कमसिजन करते हैं, ठीक है, वो तक मतलब उनमें है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग कॉमन बिटवीन we can say any practicing Jew and any practicing Hindu. As a matter of fact, there's अगर कोई एक इस्राएली और एक पाकिस्तानी को आप खड़ा कर दें, सही है, there's going to be way more commonality between like a Pakistani Muslim and an Israeli Jew. ये ज्यादा होगा। लेकिन अच्छा, आपने एक मिनट, ये क्या हुआ ये? हेलो जी अरसान, we can hear you. बोलो वो तो मैं बस ये उसके कह रहा हूँ बाद कि के लिए देखें, वो कर रहा मैं है। सिर्फ बस ये, लेकिन लास्ट बात बस ये करना चाह रहा हूँ कि बिकॉज रियलिटी, जैसे अभी कहते हैं रुपेश झा ने एक हिरोशिमा नागासाकी की एग्जांपल दी ना, बात वही है कि द थिंग इज दैट हिंदुत्व सी Israel to be succeeding in what they want to do with Muslims in India. ये उनको एक बहुत बड़ी एक ये है कि उनको एक वो एक फील होता है कि यार this is what we want to do. We want to kick them out of their lands. We want to kill them. We want to rape them. We want to slaughter them, and then we want to blame them for all the crimes they committed themselves. ये मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन लगता है, और दूसरा आप कोई एक रीजन नहीं बता सकते
कि मतलब ये कि क्या 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 होता है जिस बुनियाद पे कहते हैं हिंदुत्व इसराइल को सपोर्ट करता है, नो अदर रीजन, और इस पैशन के साथ। ये Arslan, what you're saying is right. So आंदोलन जी, मैं एक पॉइंट छोटा सा बताना चाहता हूँ, then I'm going to come to you definitely, और मुझे यकीन है कि you'll have a lot to add to what Arsalan is saying. ठीक है, देखें, मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब होलोकॉस्ट हुआ था, जिसको शवा बोला जाता है, इसराइल was established as a homeland to protect the Jews. I want to emphasize upon that. ठीक है. At the same time, modern laws of war were established to protect all civilians in all forms of conflict. That's what was decided. That's why UN came into existence, right? And that is why we had the Geneva Convention. अब इसके signatories को अगर हम इस point के ऊपर देखें, it's very ironic. Israel, United Kingdom, United States, Canada, जो अभी थोड़े दिन पहले कुछ और कह रहा था, they're outrightly going against what they signed in the Geneva Convention. Out of what? It is due to something. ये सोचने वाली बात है कि all of a sudden what happened. अभी पिछले साल तो ये बड़ी डिफरेंट बात कर रहे थे, आज से 10 साल पहले भी डिफरेंट बात कर रहे थे. And when we look at the other side, जिनके साथ इनका कंपटीशन है, तो अगेन ऑल ऑफ अ सडन रशिया, जिसका एक बहुत बड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, और उसके अलावा जस्ट दे यूज्ड टू compete with the United States in terms of supporting the Israel cause, right? In terms of the Jews, and they were hand in hand. Why are they talking about peace all of a sudden? Why is the Ukrainian Prime Minister referring to Putin and all those people as Nazi supporters all of a sudden? How have the tables turned? China is propagating peace. And again, बहुत सारे लोग, और आंदोलन जी से मेरी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दफ़ा बात हुई है, very tactfully, Jay Shankar and Modi also moved towards what the stance of Russia is. हालांकि बहुत सारी दफ़ा लोग एग्री नहीं करते कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ है. I think this is more to do with interest in terms of global hegemony. This is all the game of spheres. That's what's coming to light. It's all about the BRIs. It's all about expansion. It's all about who controls, who's the top dog. And उसके अंदर अगर पैलेस्टीनियन कैजुअलिटीज हैं, यूक्रेनियन कैजुअलिटीज हैं, या हमने अपने लाइफ टाइम में देखा अफगान कैजुअलिटीज हैं, इराकीज कैजुअलिटीज हैं, सो व्हाट, वो तो आम लोग हैं, वो तो मर जाएंगे. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि जब एक कॉमन आदमी जो शायद कभी इजराइल नहीं गया, वो कभी पैलेस्टाइन नहीं गया, वो कभी इराक नहीं गया, वो पैशनेटली एक ऑप्रेस्ड लोगों को, या दोनों साइड के ऊपर जहाँ पे इनोसेंट लोगों की लाइफ जा रही है, वहाँ पे हेट को सपोर्ट करना शुरू कर देता है. ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो आंदोलन जी, आई थिंक अरसलान ने भी आपको काफी बातें की. आप एक छोटी सी बात कर लो, फिर आंदोलन आप पूरा जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि आप जब शाहजी नहीं थे तो आपने कुछ बातें कही थी कि आपने कहा था कि मतलब देखें क्या था, आईसिस को क्या कहते हैं सपोर्ट किया जा रहा था. पहली बात तो ये है कि नहीं, अब आपकी कहते हैं आपको कुछ 2-4 लोग मिल गए होंगे, वो तो खैर आपका सर्कल होगा, लेकिन आईसिस को डे 1 से जो है कहते हैं उनसे नफरत सभी को थी, ठीक है. और जब उन्होंने सेक्स स्लेव्स बनाए उसके बाद तो और ही ज़्यादा नफरत हो गई. लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईसिस ने हमास के लोगों को बड़ा कत्ल किया है, और उन्होंने इस पूरे टाइम में किसी एक मुल्क से अपोलोजाइज़ किया है, तो वो इसराइल है. ये क्या कहते हैं, कोई मैं आपको कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के दे रहा, मैं आपको कहता इंटरनेशनल मीडिया, उनके स्पोक्स पर्सन, सब लोगों ने वो है, मतलब ये एडमिटेड बातें, कोई अगेन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में मिल जाएगा ये सारी बातें जो मैंने अभी आपसे कही हैं, ठीक है. और रही बात ये है कि अपना जो कहा कि क्या पैलेस्टीनियन हमास ने कहते हैं अभी कोई रेप्स किए हैं, कुछ ऐसा किया है, उनके कोई ऑफिशियल चैनल से कोई ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि यार हमने कोई कहते हैं रेप किया है या हमने वो कुछ किया है. ये जो इवन जो बिहेडेड बेबीज वाली बात थी जिस पे व्हाइट हाउस तक ने बोला था,
वो भी व्हाइट हाउस ने बैक ट्रैक कर लिया है साइलेंटली, लेकिन यानी अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे आप देखें साइलेंटली बैक ट्रैक हो चुका है। तो यहाँ पर कोई अभी तक, बल्कि उल्टा ये सारी बातों के बाद लोगों को फिर यही हो गया कि यार एज ऑलवेज इसराइल प्रोपेगेंडा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो मैं मिसाल के तौर पे मैं आज आपसे यही अभी अभी आप इस बात का जवाब दीजिएगा, प्लीज दीजिएगा जरूर, इसका गोल गोल मत घुमाइएगा। अगर ये साबित हो गया, ये क्या कहते हैं, इसराइल सॉरी हमास ने कोई क्या कहते हैं रेप्स नहीं किए, कोई बच्चों का कत्ल नहीं किया, तो उसके बाद आप इसराइल को मतलब ये कि बगैर किसी कंडीशन के कंडेम तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो 1000 बच्चे शहीद कर दिए फ़लस्तीन के, और ये तो मतलब प्रूवन बात है। अभी ये मतलब इन 3-4 दिनों में बॉम्बिंग करके वो ये काम कर चुका है। तो और अगर आप नहीं कंडेम कर रहे तो फिर क्या कहते हैं, फिर आपकी कंडेमनेशन फिर वही वाली बात हो गई है कि आप इसराइल को सिर्फ उसी तरह देखते हैं जो आप चाहते हैं कि हिंदुत्व कर पाए, कि 1000 मुसलमान बच्चों को शहीद कर पाए। वो क्या कहते हैं वो आप देखकर आप एक्साइट होते हैं, आपको अच्छा लगता है, और आप ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं, यानी मतलब है कि हिंदुत्व भी उसी लेवल पे पहुंच जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू। जी, तो मैं एक हिंदुत्व पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा और फिर आपको एक थोड़ा सा रैशनल बात भी करूंगा। तो आईसिस के जो आपने बात करी, आईसिस ने यज़दी पुरुषों को मारना और सेक्स स्लेव बनाना करा है 8 से 14 अगस्त 2012 या 2014, मुझे ठीक से डेट नहीं याद आ रही, और उसके ठीक बाद 26 अगस्त को या 27 अगस्त को या 2 सितंबर, वन ऑफ दीज 3 डेट्स में पहला मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट एशिया का ही मौलवी था, इंडिया का था या पाकिस्तान का था, जिसने ये कहा है कि आईसिस हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। उससे पहले एक भी सिनारियो में आईसिस के अगेंस्ट कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आया या ये नहीं कहा गया है कि आईसिस इस्लाम या मुसलमान नहीं है। ये तभी आया है जब यज़दी लोगों को घेर के मारा है और औरतों को सेक्स स्लेव बनाया है। उसके बाद से मुस्लिम उम्मा ने ग्लोबल कंडेमिनेशन जब चालू हुआ है, उसके बाद से उन लोगों ने डिस्टेंस करना चालू करा अपने आप को आईसिस से। इसको आप देख भी सकते हैं, जो उसके बाद फिर शायद 50 या 56 मौलवियों के बयान आए थे कि ये आईसिस हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट नथिंग बिफोर यज़दी जेनोसाइड एंड टेकिंग ऑफ द सेक्स स्लेव्स, राइट। सो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो आप वो कह रहे हैं हिंदुत्व इस स्टैंडिंग विद इजराइल, इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोषी है। कैसे दोषी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देर आई रिमेम्बर वेरी अर्ली इन माई स्कूल डेज व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd 4th, Yasir Arafat I think came to India, or Indira Gandhi went to meet Yasir Arafat. Yasir Arafat was a cult figure in India, right? I mean, he was a very revered figure, brother of Indira Gandhi, and वो राखी बांधते हैं, पता नहीं क्या क्या, God knows what. He was a very revered figure, and Indians generally used to sympathize with the Palestinian cause. लेकिन जो 2008 में मुंबई में पाकिस्तान ने होटलों पे अटैक के अलावा केवल एकमात्र जिस टारगेटेड अटैक जो करा था, वो करा था छाबड़ हाउस पे। छाबड़ हाउस था ज्यू का सेटलमेंट। पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मुश्किल से 4-5 हजार ज्यूज हैं। 99% हिंदुओं को तो तब तक ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान में ज्यूज रहते हैं, because in a population of 120 crore, you have got 5-10,000 Jews here and there spread across, and after the Chabad House incident, people came to know Sam Manekshaw was a Jew, right? He led us into victory in a couple of wars, and he was a very respected figure in India. And then people started connecting the dots that why were these terrorists from Pakistan, apart from targeting Indians, why were they specifically targeting Chabad House? And then they found out that they hate Jews as much as they hate the Indians, and that's where the connection started actually tightening. So of course in 1999 Kargil war, Israel helped India unconditionally, right? Despite of Atal Bihari Vajpayee very clearly articulating that Israel is a aggressor in the Palestinian cause, and Palestinian guys has to be given their rights of land and all. Atal Bihari Vajpayee used to say this on the floor of the house. Despite of that, Israel went all out. Till that particular point of time, I don't think we had a diplomatic relationship with Israel also. So Israel went ahead and helped us
with intelligence and some guided missiles during the Kargil war. And thereafter, with the Chabad House incident, people realized that what we are going through, which is terrorism. Even these set of people are facing the same challenge from Pakistan and global Islamic Ummah per se. That they target and kill Jews, right, like they did in Mumbai. So one of the reasons for this Hindutva Jew alliance, I think you have to give that credit to Pakistan as well. So and thereupon we realized that, while our religion don't have anything in common, while we don't have much civilizationally as common, but then again we realized we are, target of a common enemy, which is the global Islamic terror, and that's where the bond became stronger and stronger. आंदोलन जी, आर यू डन या फिर अभी आपके पास कुछ और भी है बोलने के लिए? क्योंकि मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन चले आप उनके जवाब Can I add something, if you don't mind, Rahman? Sorry, who's एक मिनट में से एक पॉइंट कर लूं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप बोल देगा. सो एक नहीं, पॉइंट मैं बस नहीं, I know. गो अहेड. जैसे आप अहमद कह रहे हैं ना कि जैसे आप कभी हिंदुत्व, लाइक हिंदूज ऐसे सोचते हैं कि दे वांट टू, लाइक जैसे आपके वर्ड्स हैं कि ऐसे सोचते हैं कि जैसे इजराइल कर रहा है हम भी करें. I pressed the back button आपको and exited the system. Yeah. हाँ, आपको लगता है कि लाइक हिंदुओं को करने की जरूरत है? एक जमाने में एक वॉर हुई थी. एक मिनट, एक पॉइंट और मैं भूल गया, वो मैं एक्चुअली बैक बटन दबा गया था, तो इसलिए पीछे चला गया. एक मिनट मैं बोल रहा था, सॉरी. असल भाई, आप अहमद भाई, आपको याद होगा कि दुनिया में एक वॉर हुई थी जिसको कहते हैं गल्फ वॉर. वो 10 साल चली थी, 10 साल. और उसके बीच में वो लड़ाई का क्या क्या वजह थी, लोग क्यों, दो कंट्रीज आपस में क्यों लड़े, क्यों उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा, आज तक किसी को नहीं पता. एंड ऑन द टॉप, यू कैन ब्लेम एनीवन यू वांट टू ब्लेम, दैट्स योर चॉइस. बट ऐसा ऐसा सोचती पूरी, लाइक इट्स नॉट अ विशफुल थिंकिंग. यस, ये सोशल मीडिया का टाइम है, पीपल हैव देयर ओपिनियन, लोग अपनी राय लिखते हैं. और स्पेशली यार सोशल मीडिया में तो पता ही नहीं होता यार किसकी आईडी, मतलब आई वुड से 80% पीपल आर विद द फेक आईडीज देयर. और ट्विटर पे जाके कोई ट्वीट कर दे, वो किस खेमे का है कि नहीं है वो तो पता भी नहीं है. पर आपको लगता है कि अहमद भाई, मतलब कि जो इनोसेंट लोग अफगानिस्तान बिटवीन पाकिस्तान के बीच में जो मरे हैं टू दिस वॉर, 20 ईयर वॉर, वहां पे लोगों ने जहां पे ड्रोन मारे हैं, लाइक पीपल डाइड वहां पे, लाइक डू यू रियली थिंक कि कुछ करने की जरूरत भी है? करण भाई, एक बात सुने, क्या कहते हैं, मैंने हिंदूज का नहीं, मैंने हिंदुत्व का कहा, ठीक है? जो भी आपका था. मेरा देखें बात एक बहुत सिंपल से देखें. एक बात है, अभी आंदोलन ने कहा कि कहते हैं ये मुंबई अटैक की बात हो, नहीं ये बात तो नहीं है. मैं कहता है मैं इंटरनेट ऑलमोस्ट 2002-2003 से इस्तेमाल कर रहा हूँ. 2004 में शायद ऑर्कट भी आया था, उस पर भी मैं देखा था. इसराइल का सपोर्ट जो है बहुत वक्त से था. और रही बात इंटेलिजेंस का सपोर्ट, तो भाई इंटेलिजेंस ने, मोसाद ने तो क्या कहते हैं, वो जो वो वाली जो थी अफगानिस्तान और रशिया वॉर जो थी, यूएसएसआर वॉर, उसमें भी उसने मतलब एक बड़ी इंटेलिजेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी. आईएसआई और मतलब मोसाद में बहुत पहले से मतलब बातचीत बहुत चलती हुई आ रही है, ठीक है ना? तो अगेन मतलब इंटेलिजेंस को आप थोड़ा दूर रखें इस बात से. ये जो अभी आपने कहा ना कि देखें करण, आप कह रहे हैं कि कोई मतलब एक होती है विशफुल थिंकिंग, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि यार क्या कहते हैं, अभी कुछ सालों में आप लोगों के पास क्या कहते हैं वो कैंप्स नहीं बने थे इंडिया में. क्या कहते हैं वो जो अभी दो जो लॉज जो थे, जिसमें एक लॉ से क्या कहते हैं वो उसमें आप कहते हैं किसी को भी कहते हैं वो सिटीजन, ये नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर सकते हो, जो अपनी मतलब वो क्या कहते हैं वो पुरानी वो नहीं दिखा सकता कि मतलब उसके दादा यहाँ पर थे. और दूसरा लेकिन लॉ जो है मतलब वो सबको रेफ्यूज स्टेटस देता है सिवाय मुस्लिम्स के. सही है. वो यार क्या कहते हैं वो कोशिश ये इस चीज़ की नहीं थी कि क्या कहते हैं कि मतलब ये कि वो किया जाए. तो देखें यार, ये बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि यार क्या कहते हैं, ये इसराइल को सपोर्ट बिफोर मतलब ये पूरी इस पूरी चीज़ से क्या कहते हैं, ये जो वो है ये इवन जो मुंबई अटैक्स है उससे पहले से सपोर्ट है. अब अगर हम लोग निटी-ग्रिटी में अगर जाने लग गए, तो फिर देखा जाए तो क्या कहते हैं हिंदुत्व जो है, मतलब जो गोलवारकर था वो तो मतलब बड़ी फ़ख्र से उसको सपोर्ट किया करता था.
क्या नाम है, हिटलर को सपोर्ट किया करता था, नाज़िज़्म से बड़ा इंस्पायर्ड था। अगेन बात वो यही आ रही है, लेकिन अब क्यों मैं फिर लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो मतलब दोनों अगर ऑपोजिट हैं, फॉर वैसे तो खैर है नहीं ऑपोजिट, लेकिन चलो अगर मान लिया जाए कि अगर ऑपोजिट है, क्यों सपोर्ट हो रहा है? बात वही है कि यार यू आर अटैचिंग टू समथिंग दैट इज़ लाइक हेल्पिंग योर कॉज़। अहमद, द प्रॉब्लम इज ये, मैंने जो आपसे पूछा उसका तो आपने जवाब दिया नहीं। 10 क्या साल वो क्यों 10 साल क्यों लड़े? वो गल्फ वॉर अपना क्यों हुई? ईरान ईरान इराक की जंग की बता हाँ रहे हो? हाँ, वो क्यों हुई? 10 ईरान साल वो इराक की क्यों जंग लड़े? यार, अपना मैं आपको मतलब ये कि ये क्या कहते हैं, क्या वो जंग रिसोर्सफुल थी या उससे फायदा हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत ही तो किसने पागलपन था आवाज उठाई वो। कि ये गलत है? ये हरकत क्या कहते हैं, लेकिन चलो मैं थोड़ी सी आपको समरी देता हूँ उस जंग की। मैं कि क्या कहते हैं, जब ये ईरान में जब वो रेवोल्यूशन आया था, तो जो वो थे क्या कहते हैं, इराक में जो सद्दाम हुसैन थे, उसको एक लग रहा था कि यार देखो अभी बड़े ही खराब टाइमिंग चल रहे हैं, सही है। एक प्रोविंस है अरबिस्तान के नाम से, ठीक है, जहां लोकल अरब्स हैं वहां पे, वो मतलब लिटरली इराक की बॉर्डर पे लगे हुए हैं। और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कहते हैं हम लोग वहां पे ऑयल है, सब कुछ है, बस हम लोग उनको टेक ओवर कर लेते हैं, दैट्स इट, वी आर डन। ये वाला मामला हो जाएगा, सही है। उन्होंने कहा कि हमारे अरब भाई हैं, हमारा साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नो, वर ईरानियन, हम लोग फखर से हैं, हम लोग इनके साथ हैं। उसके बाद जो है 82 में जंग खत्म करने के लिए सद्दाम मान भी गया था, पर उस टाइम पर खुमैनी को ये हुआ, यू नो व्हाट, इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू टेक ओवर करबला, सॉरी not करबला, yeah, actually Karbala, and it's good time for me to take over the shrine of Hazrat Ali radiyallahu anhu alayhi salam. उससे क्या होगा कि उससे मैं we're gonna become the center of Shiism। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेजॉरिटी अपना जो इराक की जो पॉपुलेशन है वो 60% शिया है, वो हमारा साथ देगी। लेकिन क्या हुआ, उल्टा उल्टा मामला हो गया कि उन्होंने साथ नहीं दिया। हमारे क्या कहते हैं, मैं एक जानने वाला था, वो इराक में काम किया था, उसने एक पिक्चर लगाई थी। उसने पिक्चर लगाई थी एक खातून की का उन्हें पुतला सद्दाम हुसैन लगाया था। उसने 100 ईरानी सोल्जर्स को अपने हाथ से कत्ल किया था, एंड गेस व्हाट, शी वाज अ शिया। बात ये है कि यार ये जो जंग थी, ये जंग इंतहा से ज्यादा अहमद मतलब वो भाई, थी। पॉइंट ये है कि इनोसेंट लोगों को तो मारे गए ना इनोसेंट 10 लोग साल में। बेचारे, इसमें इनोसेंट ही मारे गए हैं, हाँ हाँ, इसमें बेचारे इनोसेंट ही मारे गए हैं। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि तो इसका मतलब तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब कि ना हिंदुत्व की ना इजराइल की, आप खुद ही कर लेते हो ये काम। भाई एक बात है, आप असल में दो अलग बातों को नहीं, आप इसको देखो। एडमिट करो ना, 10 साल तक आप लड़ते रहे वहां पे, तो किसी ने यार 10 साल पे देखो, बात सुनो, मैं नहीं लड़ रहा था 10 साल में, वो नहीं असल दो में अब कम्युनिटीज तो लड़ रही थी ना। यार दो कम्युनिटीज, वो दोनों देखा जाए, आप मैंने आपको अभी रीजन, आप बिना वजह 10 साल लड़ते रहे, तो आपको तो आपको तब मैंने तो अभी किसी की रीजन जरूरत नहीं बता पड़ी। दिया, उसके पीछे मैं रीजन आपको बता दिया। इट एक डजंट मेक एनी सेंस टू फाइट, इजंट इट? भाई वो आई एग्री विद यू, वो मैं इस बात से हाँ, कौन तो फिर आपको डिसएग्री कोई कर। वजह चाहिए लड़ने के लिए, बताओ। यार लेकिन मैं एक बात है करण, एक आप जो पॉइंट बताना चाह रही थी। गो अहेड। अब मैं नहीं, मैं जी आप सिर्फ बोलने वाली थी ना। जी जी जी, सॉरी। जी बोलो। अभी जो आप बात कर रहे थे, आंदोलन जी ने बात की ना कि वो रेप्स वगैरह आइसिस के साथ कंपैरिजन कर रहे थे हमास का। देखिए, कुछ बातें तो उनकी बहुत सही हैं, जिससे मैं एग्री करती हूँ कि जो अरसलान शायद मुझसे इत्तेफाक ना करें। देखिए, ये सही है कि इसराइल की स्टेट जो है, इट हैज़ बीन ब्रूटल टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, डेफिनेटली it has been killing babies, kids, women and everybody. We have seen this and decimate पूरा किया इस इलाके को, ये भी हम देख रहे हैं। atrocities हुई हैं, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, everything। लेकिन एक चीज है कि देयर हैव बीन सम इंसिडेंट्स जहाँ पे सेटलर्स ने कुछ हमले किए थे लोगों के साथ, तो वो इक्का दुक्का वाकयात वहाँ पे हुए थे। लेकिन जब हमास ने हमला किया, और हम तो समझते हैं कि रेप्स नहीं हुए या बिहेडिंग नहीं हुई, लेकिन जो 199 पीपल है उसमें वीमेन एंड चिल्ड्रन भी हैं, ये मानते हैं अरसलान? मैं बिल्कुल मानता हूँ, और अगर आप मुझसे जी। पूछें कि हमास जो है ना, आई कंसिडर नहीं नहीं, देम, मैं ये कह रही हूँ, नहीं मैं मैं ये उन्हें कह बुरा रही हूँ, समझता हूँ, मैं हमास को बुरा ही समझता हूँ, मैं ये उन्हें मैं अच्छा नहीं कह रही समझता। हूँ कि क्या ये जस्टिफाई है? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए अगर बाद में इसराइल कर रहा है ये, क्या हमास को भी करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं अपने करना आप को चाहिए, बहुत ज्यादा गॉड फेयरिंग बिल्कुल नहीं समथिंग, करना हाँ, चाहिए। आप अगर एंशियंट? मुझसे हमास का पूछें, मेरा अगर ओपिनियन पूछे हमास के बारे में, तो मैं उनको अच्छा नहीं समझता। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही, लेकिन एक बात है, कहना यही है, देखिए मैं एक बात सिर्फ कहता हूँ कि देखिए मसला यहाँ पर पता है क्या है, मैं एक एग्जांपल में
3-4 दिनों से दिए जा रहा हूँ, और वो मिसाल ये है कि, और थोड़ी सी सॉरी ब्रूटल मिसाल है, तो आई एम वेरी सॉरी मतलब उसके लिए, कि अगर किसी लड़की का क्या कहते हैं कोई आदमी रेप करने की कोशिश कर रहा हो और वो लड़की गन निकाल के उसको शूट कर दे, हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास गन लीगली थी या इलीगली थी, वो बात का सवाल है। पहले ये पूछेंगे कि क्या भाई कहते हैं कि तुमने ये उसका रेप क्यों करा था। हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली मसला ये हो रहा है कि हमसे हमास की कंडेमनेशन मांगी जा रही है इतनी ज्यादा कि हम लोग ये नहीं पूछ रहे कि भाई ये यहाँ इस सिचुएशन पे आया कहाँ। हमास 1987 में बनी थी, उससे पहले क्या कहते हैं पीएलओ के साथ उसको भी बुरा कहा जाया करता था। आप ये छोड़िए नईमा जी, क्या कहते हैं एक वो थी बीडीएस के नाम से निकली थी, बॉयकॉट डाइवेस्टमेंट सैंक्शन, ये एक मूवमेंट निकली थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप क्या कहते हैं इस्राएली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, सही मतलब ये नहीं है, और ये वॉलंटरीली चीज थी। आपको पता है इसके खिलाफ रिपब्लिकन्स छोड़े डेमोक्रेट स्टेट्स में इसके खिलाफ वो हुई कि अगर किसी ने किया तो इट्स क्रिमिनल। तो यहाँ तो मतलब मसला ये है कि हम किसी तरीके से कोई ना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ना बॉयकॉट कर सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, सही है। ये मसला यहाँ पर ये आ रहा है। बिल्कुल देखें जो 190 लोगों के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, और उनको यार मतलब जो जिन्होंने उनको कत्ल किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात के 110% एग्री करता हूँ, उन सबको मिलनी चाहिए, दैट्स अ वॉर क्राइम। लेकिन मेरा मसला ये है कि यार यहाँ पर तो हो गया कि इनको तो आप सजा दे देंगे, वो जिन्होंने कहते हैं बॉम्ब्स गिरा के 1000 बच्चों को शहीद कर दिया, उनके साथ क्या होगा, उनको उनको कोई सजा मिलेगी उनको, मतलब यार उनको एक लफ्ज नहीं। अभी कहते हैं रेप की एक बात हो रही है यहाँ पर, अभी अभी रेप की बात हो रही है, सॉरी मतलब थोड़ी ट्रिगरिंग बातें करूंगा मैं। पिछले साल एक खबीस इसराइली वो था, कहते हैं सोल्जर था, उसने क्या कहते हैं उसने लिटरली मतलब ट्वीट किया कि मैं कि बड़े फखर से कि मैंने फलस्तीनी कहते लड़की का रेप किया, बड़े फखर से उसने ट्वीट किया था, मतलब ये कि कोई 1.5 साल पहले, पिछले साल उसको जो ना कत्ल कर दिया, जहन्नुम में जले वो हरामजादा। उसको भी मतलब इन्होंने ऑनर किया है, उस तक को उन्होंने ऑनर किया है कि उस सोल्जर को जिसने ये हरकत की है ये। अब बात यही तो मसला यहीं पर तो आ रहा है कि यार यहाँ पर कहते हैं हम 190 पर रो रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं 5, 6, 10, 12 हजार बेचारे लोगों को शहीद कर रहे हो, ये लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है। यहाँ मसला सिर्फ नहीं हमारा नहीं यही आ रहा है। अरसलान, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। देखिए जो कुछ अब हो रहा है तो ये तो बिल्कुल आप अनइमेजिनेबल जो भी हो रहा है आप तो देख भी नहीं सकते हैं। आई मीन जो वहां पे जिस तरह से कार्नेज हो रहा है तो उसको तो कोई वो ये नहीं कह सकता ये क्यों किस तरह से कर रहे हैं। वो तो है ही ब्रूटल स्टेट, उसमें तो कोई दो राय तो है ही नहीं। वो तो करती आ रही है, बल्कि जिसने 15 साल 16 साल सीज किया हो और पूरी पॉपुलेशन को बंद रखा हो और ये इजाजत हो कि हाउ मेनी ब्रेथ्स यू कैन टेक पर डे, तो इस तरह से वहां पे सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें तो है। एंड आउट ऑफ डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमास भी मेरे ख्याल में जो है उस पॉइंट पे पहुंची है कि जहां पे उन्होंने सुसाइड करना ही चाहा, उन्होंने कहा कि नहीं लेट मजबूर जी अस ये ऑल बताए डाई। कि आपने भी कहा कि उनकी ब्रेथ भी काउंट होती है, ब्रेथ भी हाँ, काउंट होती है, दे मैनेज टू ब्रिंग वेपन्स देयर, बुलेट्स देयर, को मजाक है। ये भी देखना है ना कि उनके पास क्या हथियार थे, कहाँ से आए, किस हाँ तो तरह फिर से आए। ऐसे थोड़ा ना वो भी होगा, एक उसमें तरफ तो तो ये भी उनकी तो नहीं, एक पता तरफ तो नहीं है आप ना। देखिए आप कह देखिए, नहीं, अब एक मैं तरफ एक तो आप चीज और कहना देखिए आप चाहूंगी। मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाह रही नहीं, हूँ। देखिए आपको यू नीड टू बी एटलीस्ट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फॉर अस आल्सो, कि एक तरफ तो आप कह रही हैं कि उनके पास तो सांस यही लेने तो की। सवाल है वहां पे इस वक्त जो इजराइल में, अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पेपर्स पर्टिकुलरली दिस प्रिंट मीडिया, दे आर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट दिस थिंग कि ये जो किया गया है, ये जो हुआ है, ये हमारी जो सिक्योरिटी है ये कहाँ पे है, ये कैसे हो, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एंड we will come to know कि what has really happened, how they got so many, I mean these weapons and everything। वो आपको इंतजार करना होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, नॉट फ्रॉम द अदर साइड बट इनसाइड इसराइल कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ। बल्कि इस पे नेतन्याहू पे भी बहुत सारे इल्जाम लग रहे नहीं हैं वो कि लग उसकी रहे हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल पे। सही कर रहे हैं, तो फिर आप हाँ ऐसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ they live in a उस पे prison or भी। something। हाँ, they दूसरे उनके एक उनके सेकेंड मुझे उनके एक बात करने देंगे मुकम्मल। सॉरी, मैं बात करूं फिर आप बात करें, ठीक है? क्या नहीं? या श्योर, तभी मैंने म्यूट पे डाला ना, आप कर ले बात। ओके ओके ओके, अच्छा। एक दूसरी बात बात मुझे जो भी करनी थी, आप पहले कर ले फिर मैं कर लूंगा। जी जी, दूसरी बात जो थी कि शायद अरसला ने कोई और कह रहा था कि भाई
हिंदुत्व है, दूसरी तरफ से वही जो फार राइट है जिन्होंने जो रिएक्शन दिया है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन ये भी सवाल है कि पहले खुद हम अपने आप को देखें। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अगर समझते थे कि वही फ़लस्तीनियों का मसला जो एक जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है जिसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन आपने देखा 15 साल में किस मुल्क ने इन पे बात की है। बल्कि हमेशा से जब भी इसराइल ने कोई एक्शन किया, उसके बाद से आपका जो फर्स्ट रिएक्शन आता है कि भाई सीज फायर को। आज भी आप देखिए फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं कि भाई सीज फायर और एड पहुंचाओ। और जो असल कोर मसला है, इशू है, जिसको अगर आप सॉल्व ना करें तो ये हमेशा से रिपीट होता जाएगा। इसका आपको हर साल 2 साल के बाद देखना होगा। लेकिन अब आप देखिए जो मुस्लिम कंट्रीज है जो अब्राहम अकॉर्ड करने वाले थे, बल्कि कुछ लोगों ने किया है, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और जो मुस्लिम ममालिक इस वक्त कुछ कोशिश भी दिखा रहे हैं कि हम रो रहे हैं, बहुत पेन फील कर रहे हैं, वो भी इतने खामोश थे इस पे। इन्होंने बिल्कुल टोटली मुस्लिम कंट्रीज ने इस कॉन्फ्लिक्ट को भूल गए थे। इसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि बिफोर वी ब्लेम अदर्स वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स एज वेल। तभी तो ये मसला कहीं पे आएगा। अदरवाइज जब हम हमेशा से ब्लेम गेम शिफ्ट करते हैं ना, अपने आप को हम एग्जिम्प्ट करते हैं फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स कि वी आर नॉट आई मीन इम्पार्शियल, वी आर आई मीन अपने आप को बरी करना तो सही है, लेकिन हम ये जो मुस्लिम बेल्ट है पूरा, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा टुडे। इसलिए कि उन्होंने इस मसले को अंडर द कारपेट डाला और ये सोच के कि ये मसला अब खत्म हो गया, इसको भूल जाएं। इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस करने हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स करने हैं और ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, एंड दैट शुड बी द आई मीन फ्यूचर प्लान। अदरवाइज रेस्ट दिस पैलेस्टाइन इज हिस्ट्री, फॉरगेट अबाउट इट। जी महिमा जी, अगर हम ठीक होते तो ये इसमें सब थोड़ी होते। हाँ, इसमें एक दो पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूंगा। आई ब्रॉडली एग्री विद नयमा जी। अगर आप ये देखिए क्या कहते हैं, while you can blame anybody and everybody, which has been also a problem of the Islamic world, that the blame is shifted always to somebody else. लेकिन अगर मैं क्षमा चाहूंगा, हिंदी में कहावत है पड़ी लकड़ी लेने, राइट? उसकी भी आदत काफी है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, और चाहे फॉर दैट मैटर हमास हो। अब मिडिल ईस्ट में मुस्लिमों का लीडर बनने की जंग चल रही है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और ये आज से नहीं चल रही है, पिछले 20 साल से, 30 साल 40 साल से चल रही है। ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शन लगे हैं, किसने लगवाए हैं यूएस के साथ मिलके, सबको पता है, राइट? और उस बीच में हमास, रादर देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, goes on a rampage, siding with one party to disrupt the entire Abrahamic Accord process. It is well known why they did what they did, right? And by conducting themselves on behest of somebody else, keeping the interest of your own people at the last, is also a point which needs to be considered in the discussion. ये पड़ी लकड़ी उठा के लेने की जरूरत क्या थी हमास? दूसरा, हमास का चार्टर भी पढ़िए आप एक बार। Are they ready for a two-state solution? They are not. They want every Israeli to move out of Israel so that they can have complete control over the Israel. Are they looking for a peace solution? The answer to that is no. PLO at one point of time nearly almost reached a solution, but thanks to Hamas they could never reach that solution. And who doesn't want a permanent solution? I mean, the countries in Middle East. So somewhere, while you may want to blame US, Israel, UK and the Western world, but somewhere, you're not protecting the interest of your own people lies squarely on Hamas. आंदोलन जी, मेरे ख्याल से वो सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज को ब्लेम किया है,
ऑफ कोर्स वेस्ट को तो ब्लेम किया ही है, लेकिन आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। मैं अभी वही बोलने वाला था कि इनको हमास को इतनी अकल नहीं है कि भाई बड़े बड़े जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, पार्ट ऑफ द उम्मत, are actually now trying to do trade deals, progressive mentality. Let's just side with one of these guys who are trying to make amends and trying to get some peace. Well, instead of that, they have exactly what you just said कि भाई जो उन्होंने उनके जो मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा हुआ है, it shows कि Hamas does not have the best interest of the people of the Gaza Strip. क्योंकि आई थिंक उनको इलेक्ट ही उन्हीं लोगों ने किया है ना। Hamas was elected by the people in the Gaza Strip, right? Am I right? इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद ही तो Hamas आया था। And if you Last read the election was manifesto 18 and years then back. so then Hamas came into power post the election. लेकिन And the election, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना, ये भी theories है and some are true I think, कि हमास को क्रिएट भी किया गया था इसलिए कि फतह को कमजोर करना था, because it is always a tactics of the oppressors that you have to get most of the parties one after another so that you just lose control of everything. जो हमास भी जो है, it's also creation of the Israel. अदरवाइज इन्होंने इलेक्शन तो जीता था, उसके बाद से जो सिचुएशन पे डेवलप हो गई, फतह को जिस तरह से कमजोर किया गया और एकदम से हमास एक हवा खड़ा किया गया, इसमें भी तो नेतन्याहू का रोल जो है उसको भी देखना चाहिए। नाइमा जी, See, जो that might मैनिफेस्टो be. लिखा है हम I would like इजराइल ने थोड़ी लिखा एक था। लाइन बस यार One साथ एक को लाइन बोलने दो, साथ भी कुछ बोलना चाह रहे one हैं। second, Mehtaji. What we have to understand is that yes, Hamas was elected, but since then there has never been an election. This was back in 2006. इस चीज़ को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। Neither was Hamas ever accepted as a governing body, neither by Israel or United States or by the EU or United Kingdom. We have to also take into account the fact कि जब आप ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और aforementioned को आप सोचते हैं कि Hamas is a designated terrorist organization, just like Al-Qaeda was, specifically in the Western countries and majority of the globe. So, इसके अंदर factual बात ये है कि when a terrorist organization carries an attack out, तो उसके बेस के ऊपर जब आप जाके एक आम कम्युनिटी के बंदे को टारगेट उसके ऊपर करने लग जाएंगे, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू जब 7/7 बॉम्बिंग हुई थी, होम ग्रोन टेररिस्ट थे, मुसलमान ओरिजिन के थे, मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक गो आउट एंड स्टेट कि अब हम जितने भी यहाँ पे ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं इनकी कम्युनिटीज और इनकी मॉस्क्स को बम्बार्ड करेंगे क्योंकि ऐसे हो गए। यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो दूसरी बात ये, हमास इज जस्ट as good to the Palestinian people as Al-Qaeda has been to the Muslims around the globe. Each time something is about to develop, Al-Qaeda सामने आ जाता था। ये बात हमने last time भी reiterate की थी, and this needs to be emphasized. These kind of organizations do not have the best interest of their own communities, which they're trying to represent, and as a result, it forms a catastrophe for the ones who they are actually trying to defend. Just like in the case of Hamas. Hamas ने तो ये अटैक कर दिया। Hamas को क्या कैजुअलिटीज होंगी, nobody is ever going to find out. Hamas क्या करेगा, वो जाएगा इजरायली पैलेस्टीनियन वाइडर कम्युनिटी के अंदर, वो गायब हो जाएगा, it will vanish itself, वो disappear for the time being. वहाँ पे मरेगा कौन, वहाँ पे मरेगा आम, वहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा। So Hamas, it would not be incorrect to state,
Hamas has basically fed the Palestinian people to the butchers. So Hamas is also indirectly and very directly responsible not only for the killings of the Israeli people who they just killed nilly-willy, bas attack karna shuru kar diya at a very particular time, but they are also indirectly the killers of the very people they're trying to protect or they're trying to say they protect. क्योंकि उनको डिफेंड करने के लिए तो हमास आ नहीं रहा है now और कोई आ रहा है those people are going to die उनके ऊपर स्ट्राइक स्टार्ट हो गया है उनको पास पानी की रोक टोक हो गई वहाँ पे हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे अब वहाँ पे दवाइयों का मसला आ गया वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की एंट्री बंद हो गई so when we look at all these things and when we sum those things up so the maths is very simple and the writing is on the wall. Hamas has indirectly gone out and provided the oppressive state of Israel, an apartheid nation, which was conceived for the very opposite. At least that's what they were basically saying. The Jews were oppressed and they required a homeland and they were provided one. लेकिन एज अ रिजल्टेंट आपको नजर क्या आ रहा है आपको नजर ये आ रहा है कि अब इस स्टेट के पास बैक्ड बाय सर्टेन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस backed by the Western interest in this case, which is aligning. It could have very well not aligned, but in this case it is. They've got themselves a license provided on the behest of Hamas, empowered by the Western allies to go and slaughter the Palestinian people. That's what's happened. And I don't think there is any return from that. हमास तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा हमास विल मेक जब फिर ठंडा हो जाएगा 8-9 साल के अंदर whatever will happen ठीक है वो तो फिर कहीं से आ जाएंगे because that's what terrorist organizations do and that is my main point. इसमें बस एक लाइन Thank you, Shaji. Andolan ji, like I'll get back to the speakers. I think Saad Rahman is here and he hasn't spoken yet. So Saad, if you want to add something, please go ahead. Saad, are you here? Okay. Andolan, please go ahead. एक सिर्फ एक ही बात बोलनी है मेरे को शाह जी को शाह जी आपने कहा कि the Jews were provided a home. A home is not a home if you have to constantly go into conflict. मैंने कई बार वो मैप देखा है मेरे कई दोस्त है वो शेयर करते रहते हैं कि भाई इजराइल व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ देन इन 48 में ये था फिर 60s में ये हो गया 70s में 80s में ये हो गया 90s में ये हो गया और ऑल ऑफ अ सडन इट्स ऑल ब्लू वो every single date that is put underneath it is the outcome of the conflict. There was a home provided, but if you look at the timeline, it has always been a home with a conflict. So acceptance तो नहीं थी ना लेबनान की mention जब आप किसी को होम प्रोवाइड करते हैं एक designated territory के अंदर where already there are certain groups of people residing if you begin to eliminate them from their own territories और इसके अंदर खाली मुसलमान नहीं हैं do you know there are tens and thousands of Palestinian Christians which were removed from their land वो आज refugee बन के यूरोप के अंदर रह रहे हैं Gurudev, I understand being for you and me to say that both of us should understand that क्योंकि एक लैंड में से पीस कट के 2 पीसेस बने थे जो भारत का जो पूरा लैंड था उसमें से 2 पीस कट के so I understand that you understand that as well. Your families or maybe your friends' families were displaced out of India and went to Pakistan. Some lost their lives. The same thing applied. So we understand that. But वो conflict जो अभी जो मेस अभी है ना जो सपोर्ट किया जा रहा है आप we are discounting the whole support that the likes of Qatar are offering the likes of Saudi Arabia are offering the aid that is being offered to Hamas is being used at the detriment which you have said it yourself
but that home has always been in conflict. That's what I'm saying. इसमें बस मैं शाहजहाँ की बात में एक चीज ये ऐड करना चाह रहा था. शाहजहाँ gave an example of 7/7 bombing and UK's attitudes towards its people, which was right approach, right? But at the same time, if you see even the Israel state, right, there are quite a few number of Muslims staying within the state of Israel, and there hasn't been any retribution towards them. So the same what UK did for its citizens, Israel is doing for its citizen as well. They are targeting, the attackers, not Muslims, who are part of the Israeli state. They have got same rights as any Israeli. आंदोलन जी, आई कम्प्लीटली डिसएग्री. जितना भी आप यूएन की बात सुन रहे हैं, अभी एक आई थिंक tens and thousands of people came out on the streets of London just in the past weekend we've just seen. उसके ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर people gathered as well. ठीक है. and the fact of the matter is कि आपके जितने humanitarian organizations हैं, they are under absolutely no doubt that the attacks which are being carried out, और जिस तरीके से नेतन्याहू ने कहा है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग और ये एंड तक जाएगा. ठीक है. दैट इज नॉट किलिंग पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ हमास. Who is that targeting? That is targeting the normal Palestinians. ये तो इस तरह की बात हो गई कि जिस तरह मुंबई के अटैक्स हुए थे और दूसरी चीजें हुई थी, तो इवन द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट आउटराइटली गो आउट एंड स्टेट के अब जितने भी मुसलमान हैं इंडिया के अंदर रहते हैं वो सारे ही टेररिस्ट हैं, एटलीस्ट नॉट एट द गवर्नमेंटल लेवल. इवन दो आरएसएस और हिंदुत्व को हम बोलते हैं, वी से स्टफ के वो बारबैरिक हैं और वो ऑपरेशन और रेसिज्म दिखाते हैं. बट रिगार्डलेस, where credit is due, credit is due. Israel, as we speak, happens to be the only country which is targeting an entire community rather than people who belong to that certain group who were the perpetrators, right? यहाँ पे ना हमने इंडिया में ये चीज देखी कि इस तरीके से बम्बार्डमेंट शुरू हो गई आम सिविलियंस के ऊपर. ना हमने ये चीज 9/11 के बाद देखी. ना हमने ये चीज जब फ्रांस और स्पेन के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए, ना हमने वहां पर ये विटनेस की. We've not witnessed this anywhere in the world. It's just a fact. इसमें मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, मेरे ख्याल से आप थोड़ा गलत समझे. There are lot of Muslims staying in Israel as Israel citizen, not on the Gaza, not on the West Bank. I'm talking about Muslims who are, citizens of Israel, which vote in Israel, which have got the same right as any other Israeli, right? So, Israel has not gone up. As well. Policemen, people in administration, so on and so forth, and that's a reasonable, number. The entire Muslim population resides in Israel. So, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ. मैं गाजा पट्टी में रहने वाले या वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. उनके ऊपर कोई रिपरकशन नहीं आया, राइट? जो रिपरकशन आया वो हमास के ऊपर आया, और हमास जहां पे रहता है वहां पे आया, राइट? सो इट्स नॉट अ टारगेट अगेंस्ट अ कम्युनिटी, राइट? अब इंडिया ने अभी जैसे बालाकोट पे वो हुआ था, इंडिया पे एक अटैक हुआ था, तो दे रेप्लिकेटेड इन बालाकोट एंड सम अदर. उसके पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बट दे डिड इट ऑन पाकिस्तान बिकॉज द परपेट्रेटर्स वर कमिंग इन फ्रॉम पाकिस्तान. इंडियन मुस्लिम्स हैड नथिंग टू डू विद इट, राइट? So they were not, Indian Muslims were not targeted. Similarly, Israel is not targeting Israeli Muslims. Israel is targeting Hamas people who are staying in Palestine. देखें आंदोलन जी, मैं आपको एक चीज का रिमाइंड कराना चाहूँगा. The state of Palestine, as far as Israel is concerned, as far as the Western countries and the official status is concerned, does not exist. दूसरी तरफ इट्स आयरॉनिक कि ना आप उनको इजरायली होने का स्टेटस दे रहे हैं, ना उनकी कोई एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है.
दैट इज लाइक, देखें एटलीस्ट इंडिया की हम बात करते हैं तो वो कश्मीरियों को ओन तो करते हैं, चाहे पेपर पे ही करते हैं, वो कहते तो हैं कि कश्मीर एंड द कश्मीरीज आर इंडियन सिटीजन्स, राइट। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि एक साइड के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन is a separate country, but when it comes to the official status, even to leave the country of Israel, or what you're referring to as Palestine, उसके लिए इजरायली अथॉरिटीज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ के पैलेस्टीनियन सिटीजन्स को एंटर और एग्जिट करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप आज पैलेस्टाइन को विजिट करना चाहें, आई एम नॉट सेइंग एनीवन वुड वांट टू इन द करंट सर्कमस्टांस, you would be surprised. You would require a Israeli visa to get into that area. फिर वहां पे कस्टम क्लियरेंस होगी, फिर आप जाएंगे, yet it is not part of Israel, and yet they do not have an official status in terms of existence. So what do we do? यहाँ तक कि आप गूगल मैप्स के ऊपर जाएं और जाके चेक करें, does the state of Palestine exist? The answer is no. Thank you very much, Andolan. And that's where the difference सॉरी, is. मैं आंदोलन जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जो ये कह रहे थे कि भाई जो इसराइल है कि इट्स अटैकिंग हमास, इट्स नॉट अटैकिंग पीपल देयर, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि 1300 बिल्डिंग्स जो हैं, 1300 बिल्डिंग्स अंटिल आफ्टरनून, उन पे अटैक हुआ है एंड दे हैव बीन टोटली मेड, आई मीन दे हैव टर्न इनटू डेब्री नाउ एंड वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडर दैट डेब्री येट। तो क्या इतने ये 1300 buildings they were housing only Hamas there, or there were No, no, innocent definitely not. huh? डेफिनेटली नॉट। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट आप ये भी देखिए, जितना मैंने फॉलो करा है, हमास हैज ऑलवेज क्रिएटेड इट्स शेल्टर्स आइदर इनसाइड स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और सिविलियन एरियाज, एंड हमास इज नोन फॉर यूजिंग पैलेस्टीनियंस एज ह्यूमन शील्ड्स। तो वो स्कूल के अंदर अपने वो बम्स रखते हैं, मस्जिद के अंदर बैठकें करते हैं, हॉस्पिटल्स के नीचे कमांड सेंटर बनाते हैं, राइट। तो समवेयर इफ यू आर यूजिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड मॉस्क एज द फ्रंट, and normal citizens as human shields, then of course the repercussions would be faced also by the civilians. नहीं, But who is responsible for that? हाँ सुने हाँ, सुने but who's, तो आंदोलन जी, इसमें एक चीज ये बताइए मैम, इसमें एक चीज ये बताइए, do they have like any armed forces separate cantonment areas or separate military buildings, or they operate out of civilian areas? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं ना कि हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बाकी जगहों पे, आज ही यूएन का जो स्पोक्समैन था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम कि क्या इस तरह से वहाँ पे जिन हॉस्पिटल, जिन स्कूल्स को आप लुक आफ्टर वहाँ पे करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर अंडर यूएनएचसीआर, तो उनसे पूछा था कि वहाँ पे ये जो कह रहे हैं, इसराइल की जो एलिगेशन है कि वहाँ पे इन्होंने टनल्स एंड अंडरग्राउंड सारा कुछ बनाया है, तो उन्होंने कहा कि आप आए, हम दिखाएंगे आपकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया, क्योंकि ये तो वहाँ पे सारे रेफ्यूजीज हैं, ये सारा पूरा एरिया जो है, इसका मेजर पोर्शन जो है यूएन के अंडर है, और उन्होंने कहा था कि आप आके, हम दिखाएंगे आपको कहाँ पे, अगर ये एलिगेशन सही होती है कि देन डेफिनेटली हमास शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। लेकिन ये वहाँ पे लोग रह रहे हैं जो वहाँ जिनको रखा है, ये रिफ्यूजीज, जितने सारे कैंप्स बनाए गए हैं। अब इसराइल तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये तो वन साइडेड स्टोरी है। If we have to investigate it, after that we should know the other part of the story. वरना तो मुझे लग रहा है कि हम तो एक नैरेटिव को लेके चल रहे हैं ना। हाँ, नहीं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे नईमा जी, जैसे आप शायद पाकिस्तान में रहते हैं, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं जी, मैं तो इंडिया की हूँ भाई। इंडिया, अच्छा, सॉरी। तो इंडिया में आपने देखा होगा सेपरेट मिलिट्री ईयरमार्क्ड एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, कैंटोनियन एरिया से अलग होते हैं। जी आंदोलन जी, मैं सेम लॉजिक फिर से अप्लाई करूंगा कि जब भी इंडिया के अंदर टेरर अटैक हुए, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कैरी आउट किए, या फॉर इंस्टेंस आपके मिडल ईस्ट के अंदर हुए,
या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हुए, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के भी तो कोई कंटोनमेंट एरियाज नहीं थे, एंड येट वेदर इट वाज द चाइनीज, वेदर इट वाज द अमेरिकन्स, whether it was the British or the Indians, or whether it was any other country around the globe, right? उन्होंने कभी भी जाके वाइडर कम्युनिटी के अंदर इस तरीके से आर्टिलरी की फायरिंग नहीं की. This is why everyone is in a shock. This नहीं, is a but very ऐसा thing. You ये cannot. this is slightly incorrect statement, because if you see, even Pakistan, when it approaches Baluchistan, right, they hit inside civilian areas as well, right? Because Baluchi, dissidents house themselves within the civilian areas. In Iraq, when the US was targeting Afghanistan and Iraq, just Google, I mean, host of civilian targets where these people were hiding was taken out. And there are Iraq was a different country to United States. The equivalent would be that there would be an area in the United States of America जहाँ पे मुसलमान रहते होंगे जिनको वो अटैक करें या उनको उनका स्टेटस ना दें. It is ironic that the equivalent would be कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मुसलमान रहते हैं और उनके पास सिटीजनशिप भी नहीं है लेकिन वो रहते हैं. ठीक है, इंडिया के अंदर भी द इक्विवेलेंस वुड बी एग्जैक्टली द सेम. देखें, इंडियन अथॉरिटीज ओन द कश्मीरीज. They even in terms of official status, they say they are complete Indian citizens. Yes, that is there are issues in that area, but they do not say कि ये हमारे सिटीजन नहीं है. या आप चाइनीज के वीगर्स के केस के अंदर देखें, इट्स द सेम थिंग. यहाँ पे तो मसला ये है कि ना इनको ओन करती है इजरायली स्टेट, ना ग्लोबल जो कंट्रीज हैं या कन्वेंशंस हैं उनके अंदर पैलेस्टाइन एग्जिस्ट करता है, और ना ही उनको सिटीजन का स्टेटस दिया जा रहा है. और उनके एरिया के अंदर जहाँ पे 80% ऑड उनकी जगह पे लोग रहते हैं, विच इज इनडायरेक्टली एंड वेरी डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट इन एवरी वे पॉसिबल. उनको वहां पे फायरिंग हो रही है, उसके अंदर कितने टेररिस्ट होंगे. हमास इज नॉट दैट बिग के वहां पे मिलियंस, देयर आर नॉट मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स ऑफ हमास. That would be very illogical thing to say. वरना वो but तो then सारे जाके in that case, Shahji, in that case, Shahji, you right? If you understand see the all point this, here, Andolan. I do understand the point you're making, but Shahji, the issue is precisely this. This entire activity is started through Hamas, right? Whatever may be the political reasons behind it. But Hamas attacked the civilian population in Israel, right? Point number two, this can get over if Hamas surrenders within minutes, right? If Hamas today surrenders to UN, this entire bombing will go off, isn't it? That's the most logical solution to it. And so just the last point, right? And if there are terrorist organizations, why is there widespread support within Palestine? People were distributing sweets, right, in Palestine, in London, actually don't know in that. There we have videos no of survey which has been conducted, which is up to date, which Yeah, states it. मैं बस अपना एक पॉइंट पूरा रख लेता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ, ग्लोबली आप अभी भी देख लीजिए, अभी जो हुआ वो टेरर अटैक था, और उसके बाद मतलब ऑस्ट्रेलिया में मिठाइयां बटी हैं, पाकिस्तान में मिठाइयां बटी हैं, इंडिया में भी मिठाइयां बटी आफ्टर द टेरर अटैक, right? Israel didn't started bombarding till Sunday evening, right? From Saturday to Sunday, globally people were rejoicing. For what? तो आंदोलन जी, दूसरी तरफ भी तो मिठाइयाँ बटी हैं, और minorities exist in all communities who adhere to such philosophies and who get orgasms out of such killings and such kind of extremist fascism. अब उसके अंदर मेरी भी अब पूरी बात सुन लीजिए ना.
आंदोलन जी, बात ये है कि majority of Muslims और Palestinians, ये तो इस तरह की बात हो गई कि अब आप किसी भी मुसलमान को बोलना शुरू कर दें कि वो अल-कायदा का सपोर्टर है. That's not the case, is it, आंदोलन जी? I'm No, but sure if you if let's say if let's say Al Qaeda carries out a terror attack or like 9/11 on US, and let's say there are sweet distribution happening in Pakistan and Palestine, what would people understand? देखें, when 9/11 bombings took place, there was a man in United Kingdom जिसने Magnificent 11 के बोल के उसको I remember his nickname. He was known as Hook something. I'm forgetting his exact name now. ठीक है, वो Finsbury Park Mosque के अंदर था, East London वाली साइड पे. He celebrated the hijackers and the people who flew the planes in the Twin Towers. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अमेरिकन्स ने या ब्रिटिश ने वहाँ पे जो ब्रिटिश मुस्लिम सोसाइटी थी या वो कम्युनिटी थी उसको जाके बम्बार्ड करना शुरू कर दिया. नो, दे imprisoned those people who were supporters. They No, took them but to the authorities. but और at the इसी same time, तरीके से but at the और same time, यहाँ पे Shahji, बिल्कुल but देखें Shahji, देखें just one point, बात एक मेरा point, पॉइंट समझिए एक ना, point, फिर आप एक बात एक point बस, एक छोटा सा point, मैं ये कह रहा हूँ, but at the same time, US bombarded Afghanistan for 20 straight years. They were not their citizens, not in their realm. I can So understand that. I precisely, don't agree with that precisely the point. bombardment. I do So not the point. So try to get the agree. point I'm making, right? US pinpointed that attack, and said this has been done by. क्या कहती है उसके बारे में? नहीं, एक से मेरा पूरा पॉइंट तो सुन लीजिए. हम कह रहे यूएस ने उस समय bombarded Afghanistan to ruins, right? Because Mullah Omar and team took the ownership of that. उन्होंने पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उनके पूरे समाज को उसकी हानि उठानी पड़ी. So how right? is that Not the entire population of Afghanistan was आंदोलन जी, अगर responsible, आपके right? पॉइंट को एक दफा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली, तो आप मुझे बताएं, हाउ इज द अफगान वॉर व्यूड बाय द वर्ल्ड टुडे? How is the Iraq war viewed by the world today? How are both of those wars viewed by the very people and those countries who carried them out? WMDs आज तक नहीं मिले हैं. फिर आप दूसरी चीजें देखें, तालिबान के हाथों के अंदर वो कंट्री छोड़ के आ गए, उनसे निकालनी थी. 20 साल तक हमारे ऊपर चिल्लाते रहे, आम मुसलमानों के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर, जिनको तालिबान का कुछ पता भी नहीं था. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं से नेगोशिएट किया, जिनके साथ मसला था उनसे ही नेगोशिएट किया, दोहा एग्रीमेंट साइन की. ठीक है, और वहां से निकल गए. जो 20 साल तक हम लोग सफर करते रहे, क्लैरिफिकेशंस देते रहे कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच वी कंडोन. वो कहां पे क्या आप मेरा ही पॉइंट एग्री कर रहे हो शाहजी. वही पॉइंट मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे पॉइंट से एग्री कर रहे हो. जस्ट वन लाइन टू ऐड इन, राइट? कि अफगानिस्तान में देयर वाज सेट ऑफ पीपल जिन्होंने पड़ी हुई लकड़ी उठा ली, राइट? वो तो खत्म हुए साथ में उन्होंने अफगानिस्तान के 2-3 जनरेशन खत्म कर दिए. सेम थिंग हमास इज आल्सो डूइंग, राइट? Why are people not getting a sense of doing a repeated mistakes again and again and again? That whether it is Al Qaeda, whether it is ISIS, whether it is Hamas, ये लोग अपने लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पड़ी लकड़ी उठा रहे किसी दूसरे के लिए. अहित होता है इनके खुद के लोगों का. इस चीज पे कंसेंसस क्यों नहीं बन पा रहा है मुस्लिम उम्मा या समाज में? देखें आंदोलन जी, उम्मा क्या कर रही है, उम्मा क्या नहीं कर रही, इज अ सेपरेट क्वेश्चन ओवर हियर, राइट? उसके अंदर हम ड्वेल कर सकते हैं, वी कैन गेट इनटू दैट. But the point over here is, don't you see a primary difference in the way Israel is carrying it out? क्या इवन इंडियन अथॉरिटीज ने कभी कश्मीर के अंदर इस तरह की हरकत की है? तो आप मुझे एग्जांपल देते हैं. पर अगर कल को, जैसे जो अभी करंट गवर्नमेंट है, कल को बॉर्डर पार से इस तरीके की हरकत होती है,
right? Let's say Pak-occupied Kashmir, right? Which we consider as our own. Their citizen we also consider as our own. Let's say tomorrow something like that happens out of POK. Don't you think India will respond the same way? I don't think so. No other country has. India hasn't responded the same way. Neither has And China. also आंदोलन जी, I would mention here कि जो उनका official stance है आपकी government का, that is very balanced, I would say, and very different to what you are saying. So मेरा नहीं ख्याल it would be reciprocated in a way कि civilian population के ऊपर भी चढ़ाई कर दो. I don't think So let me देखिए assure you. आंदोलन जी, If मैं let me कुछ assure sample you, के point पे एक छोटा सा point एक ऐड लाइन करना बस, चाहता हूँ. just एक one लाइन बस ऐड कर दूं. If आंदोलन भाई, उसके something बाद what आप happened to, एक ही हाँ साथ मैं आप बस रुक दुआ जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा उसके बाद. एक ही मैं साथ कह रहा आई हूँ वोंट इंटरप्ट यू, आई प्रॉमिस यू. ठीक है, आप एक और चीज नोट करें कि इंडियन गवर्नमेंट व्हिच इज इन पावर राइट नाउ is the BJP government, which people say is the basically the political wing of RSS. लेकिन अगर आप उनका अभी stance देख लें, it's very different. It's not something which they're endorsing. आप जयशंकर के words देखें, ठीक है, they completely match what Russia is stating. I don't understand कि आपकी अपनी जो government है, it's basically stating something very different to what you're stating, no? so. Okay, I think there are two aspects to it, which let me again clarify. India has a long-term standing of two-state policy when it comes to Israel and Palestine, right? That as a state policy not changed. What India or the Indian Premier and the government has taken an unequivocal stance is with respect to the terror which happened on Saturday. And they clearly said, including the Premier of the nation, that we stand with Israel when it comes to terror attack. So, the point which you were making, if something like that happens out of POK in Indian territory, it will see the same outrage what you're seeing from नहीं, Israel. अगर आपको लगता है कि इस तरह इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस होता, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ये ना कहती कि व्हाट इजराइल इज डूइंग, इट शुड लाइक लुक फॉर पीस rather than going towards this direction, right? So the same stance they took with respect to Russia and Ukraine war as well, right? But you know where the tilt is. Yeah, so whatever might be the reason, India. finally आप tilt से agree कर गए आंदोलन जी. पहले आप नहीं देखिए, मैं आपको नहीं मैंने टिल्ट, मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर बता रहा हूँ. जो पहले भी अरसलान से मैंने कहा, हाँ कि 2000, हाँ एक लाइन बस, एक लाइन मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूं. Before 2008 Chabad House attack by Pakistan, Israel were helping India. India was not reciprocating because people did not understand broadly. Israel was helping India since 1975, but India was not reciprocating. There wasn't even a diplomatic relation with Israel because Israel was not recognized. However, post 2008, the people started recognizing who these Jews are. Why was the Chachad House attack happened, and the reciprocation started happening people to people. Even still, till about the same BJP government under Atal Bihari Vajpayee was very strong stance with Palestine, but this has changed post 2008. Thank you, Andolanji. I think we are almost reaching the end of the stream. So I would go to all the panelists for their final comments. Rupesh, you have anything to add in the closing statement? Yeah, I have a lot to say. I have heard, and I want to tell you. Let me start. Because of the problems, what the problems Jews were having, and there was a declaration to make a separate Jewish state, separate Arab state, and a city of Jerusalem. That was the original. That was the General Assembly of United Nations that adopted Resolution 181-2. So this is, and the Arabs always attacked all the conflict was started by Arabs, and Jews defeated them, and that's how they expanded.
So that is the first point. And now coming to the point, whenever there is a conflict and these kinds of terrorism, there is a certain person who is the benefactor, or a group of people who are benefactor of these conflicts. Now go by who is the benefactor. You should take that there is a certain gentleman who goes by the name of Dr. Musa Abu Marzouk, who is the fundraiser of Hamas. And if there is a destruction in Hamas, in the Gaza Strip and other things, he will collect fund. And there was lot of corruption and misappropriations of funds by these Hamas leadership. So that can be one of the reasons that they want to, okay, now I have to earn some more money. Let's start some destruction, and then we will go around Europe, America, and collect money. And who cares about people? That can be a case. That is one possibility that is going back. And second, Hamas is an affiliate of Muslim Brotherhood. Brotherhood, exactly. You see that. So they have, in their charter it is that they want to throw Israel in sea. Yeah, and that is not I am making up. It is clearly written in their charter, and they are doing according to what they say. So at least I would have to give them the credit that they are truthful to their mission. So, and second thing is that you cannot deny and deflect it. They attacked it, and people of many nationalities were killed or are being taken hostage, and they operate from the Gaza Strip. That's also true, and nobody is denying it. So you have to do something. You have to get, this conflict can end within an hour if Hamas gives up the hostages and absolute surrender, complete surrender, like Germans did and Japanese did, to lay down the arm, and they'll be tried by the international court or something, by international authority. I think that will be the best solution if those things happen. When there are operations and when they don't agree, and then you have to fight a war, you cannot let these kind of savages go unpunished. So you have to do a separate. And I would like to remind the fact, since you have brought Hindutva, but then I will have to, that there was some kind of operation from a certain country for Taliban, the drone attacks. And I would like to remind you how many civilian casualties were done in those drone attacks, and many innocent people will kill, and nobody is bothering about. But that Al-Qaeda gentleman, the chief, who was somewhere in say that Taliban was given, what he was found in certain other country, whose prime minister has said in the parliament, Shaheed Osama ji, he has said in parliament, if a prime minister says in parliament, it means something. It's Shaheed. I won't hurt your feelings by saying he is not. So yeah. Let me complete. You can say everything. So. No, okay. Let me finish it. I just speak fast so that I complete it within the time. So those things happen, and it is nothing new. So why are you saying that it is something new? These things happen. So it is the natural course of action. If you grow some bushes or something like that, you get what you are sowing. You reap what you sow. So I would like to point on that hypocrisy, since you talked the off-line subject of Hindutva. So please look in the mirror, in your own face, what you are, and that will solve 100% problem of Muslim world. Thank you, sir. Thank you for listening. Thank you, Rupesh. Mahatma, Yeah, you have Rupesh, Rupesh, I think when you talk about hypocrisy, please also tell us about how your Hindutva leaders were endorsing Hitler, and now you're a Jews sympathizer. I mean, please, let's not talk about hypocrisy. So can I Whatever just Caravan add magazine history says, to it? please, just one moment. Whatever Caravan magazine says, or some lad sitting in Qatar in Al Jazeera says about Guru Golwarkar, is secondary to what the No, reality it's is. in Okay, his own books. please. But thank you. Yeah, exactly. So It's in his own can books. I add a perspective to it? It's in Just his one own line. books, man. You cannot Yeah, just yeah. deny your own leader's books. I'm not. There is no let denial me here. just let me add a perspective. Just let me add a perspective here, right? Just let me add a perspective here, right? I would, So, Andolan ji, एक comment कर दूं. Like, Medusa got you by the neck, Rupesh, to be honest. जी आंदोलन जी. हाँ जी. अच्छा, इसमें जो बात ये कह रही है, क्या इनकी किताब में ये लिखा था, राइट? लेकिन ये किस समय का संदर्भ है? ये समय है 30s और 40s का. गोलवर्कर और हिंदूवादी संगठन को
जर्मनी में लेके कौन गया था आपको पता है? यूएस ने फंड करी थी। उस समय यूएस वॉज बेस्ट पैली विद हिटलर, because Hitler was not eliminating Jews at that आंदोलन जी, particular point. ये सेम Just वही hear me out. आर्गुमेंट Just hear me out. Just hear me out. सेम Just hear me वही out. आर्गुमेंट है कि आप मेरी बात तो खत्म करने दो। बाहर के लोगों पे मतलब देखो, एक सेकंड आंदोलन जी, ऐसे तो तालिबान भी आधे अमेरिका ने बनाया ना। अरे मैम, तालिबान तो अमेरिका ने मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात तो सुन लो। इतना मतलब 2 सेकंड बाद बोलना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय की बात है जिस समय हिटलर को पूरी दुनिया फ्रेंडली समझती थी। तो ये पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कराई गई थी, यूएस ने ऑर्गेनाइज कराई थी कि देखो यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है। इटली भी लेके गए थे, फ्रांस भी लेके गए थे, और क्या कहते हैं, जर्मनी भी लेके गए थे। तो ये जो आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट सब्सिक्वेंट इवेंट से उनका कोई लेना देना नहीं। जी जी बिल्कुल। It's just like, sorry, just एक मिनट शाहजी, मेडू शाहजी, मैं एक बात को देखो नहीं आंदोलन जी, ये तो ऐसे आपने गर्दन से पकड़ा है। रुको एक सेकेंड मेहता जी, बात तो मुझे बात तो मधु करने देना। आप लोग 2 घंटे बोले हैं, मुझे बात करने दें। ये तो ऐसी बात हुई कि तालिबान बनाया अमेरिका ने, टाइम मैगजीन पे आए मुजाहिदीन, द वॉरियर्स, द हीरोज, बट लेटर ऑन छोड़ दिए और फिर सब कहने लगे पाकिस्तान ने बनाया। ये देखो, ये वही वाला सिचुएशन है ना। एक पॉइंट मैं कहूंगा, एक सेकंड साथ, एक पॉइंट मैं कहूंगा कि अभी आंदोलन जी और रुपेश, आई डोंट नो, दोनों के आर्गुमेंट्स में एक चीज थी कि जब कुछ नहीं मिलता मुस्लिम उम्मा को ना अमेरिका पे डाल देते हैं। तो अब आप आंदोलन जी वही आर्गुमेंट ला रहे हैं। इट डजंट मेक सेंस ना। देखो भाई, ये आप सब सही कह सकते हैं, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप तब एक्यूजेशन कर सकते हैं। मैं बड़ी यार आंदोलन की एक सेकंड रुके, वी आर गोइंग फॉर अ क्लोज, रिमेन काम पीपल, एवरीवन, हाउ यू बिहेव वेल टुडे, प्लीज कीप डूइंग दैट। क्या कहते हैं आप लोग, क्या तहम्मुल से संयम रखे, संयम बनाए रखे, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। अभी शाहजी मेरा संयम टूटे उससे पहले साहब, डू नॉट इंटरप्ट प्लीज। आपको मैं मेरे बात आप जरूर बोलिएगा, नो वरीज, प्लीज रिमेन काम। अच्छा जी, तो बात ये कि आंदोलन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आंदोलन जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंदोलन जी डिड नॉट state anything incorrectly. So with time and circumstances, according to interest, people change sides, countries change sides, and they make different statements. That's so people should realize India does not have any love, or RSS does not have any love at this moment in time for the Palestinian people either, as they do not for the Jews in the long run either. दूसरी बात ये, आंदोलन जी ने एक्नॉलेज किया कि टाइम वाइज ही सही, लेकिन मेहता साहब अल जजीरा के किसी बंदे ने वो नहीं लिखा था। नहीं, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं करने देते आप। नहीं, आप सुनोगे मेहता साहब। शाहजी, ठीक है, आप बीच में कट क्यों कर रहे हैं? आपके पास नहीं, क्योंकि आप जिस तरह जा रहे हो ना, मेहता उन्हें कंप्लीट करने दें। मेहता साहब, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आई एम ऑन म्यूट, प्लीज कैरी ऑन सर। थैंक यू, क्योंकि मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। देखें, आंदोलन जी वेरी क्लेवरली पॉइंटेड आउट, मेहता साहब, पूरी दुनिया को इस बात का पता है, ये वेरीफाइड है। आपको चाहिए तो हम हिंदुत्व के ऊपर 1-2 वीक के अंदर एक रूम कर देंगे, उसके अंदर आपको हम बुक दिखा देंगे जिसके अंदर हैंड रिटन है, किससे हैंड रिटन है, बाय हु, ठीक है, वो भी पता लग जाएगा। नोबडी डिनाइज दैट इट वाज अ डिफरेंट टाइम इन अ डिफरेंट एरा, लाइक आंदोलन पॉइंटेड आउट, बट दैट बेसिकली स्टेट्स दैट स्टेट्स, गवर्नेंस and other people neither have love for a certain religion or a community which they do not belong to. वो circumstance और interest के साथ change होती रहती है। आज आप Jew को पसंद कर रहे हैं, आपकी state का interest किसी और तरफ है, तो वो पैलेस्टाइन को indirectly support करेगी।
जिस टाइम के ऊपर ऑपोजिट था तो ऑपोजिट था। तो दिस इज हाउ इट इज। ये किसी अल जजीरा के बंदे ने नहीं लिखा। इट वाज अ डिफरेंट टाइम इन अ डिफरेंट एरा। और पता है आरएसएस की अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, ठीक है, उनकी कंसेप्शन के अंदर है, वो बताते हैं कि उनकी जो अपनी टाइमलाइन है, इफ यू वांट आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट, उस पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि पूरे स्टडी ग्रुप्स भेजे गए थे जर्मनी आरएसएस के इनिशियल ईयर्स के अंदर फॉर एटलीस्ट अ डेकेड टू लर्न अबाउट द सर्टेन स्टफ। तो इट्स फाइन, आपकी नॉलेज में नहीं था सब कुछ, I सबको just नहीं want to पता add होता। one more thing. I just want to थैंक add यू। one more thing. Yeah, Rupesh, just so pile it you, on, pile it on, pile it on. Acha, just one small thing. Rupesh, I don't know if you know this, but let me tell you this. और ये मैंने अल जजीरा के वेबसाइट पे नहीं पढ़ा, ये मैंने एक बहुत अनबायस्ड वो में पढ़ा, which was telling stories about wars. आपका जो इसराइल का सपोर्ट है, जो आप ये जो बहुत ही पैशनेटली जूस को सपोर्ट, मतलब जूस ने इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इट डजंट हैव टू बी अ जूइश थिंग। आप जो आपका जो इसराइल का जो आपकी जो स्टेट पॉलिसी आई है ना, ये तब आई है जब यूएस ने आप पे सैंक्शंस लगाए थे, आपने जब न्यूक्लियर बनाया था और यूएस ने आपने सैंक्शंस लगाए थे और इसराइल ने आपको ऑफर की थी आपको वेपन्स बेचने की। दैट्स व्हेन यू चेंज योर स्टांस फ्रॉम सपोर्टिंग पैलेस्टाइन through thick and thin to going towards Israel. It's a very recent 90s thing, like 20 years back. ठीक है, so please, I mean, read this stuff out, man. You don't have to get so upset over someone who have nothing to do with you. Technically they have nothing to do with you. I mean, religiously, geographically, let me just tell you this. The moment Palestine, for example, Gaza Strip is over and Palestine is all free and whatever, these Israeli wouldn't give any two hoots to you. ठीक है, right now they might be all friendly because they need your support. ठीक है, that's why they gave you the weapons, they needed your support, but they don't give two hoots about you, so you don't have to get so emotional about it. ठीक है, I'm honestly speaking, I'm not anti-Jew. ठीक है, but जो नजर आ रहा है वो हम वही बोल रहे हैं ना। तो आप देखो, अगर हम इंडिया के बारे में कुछ बात करें और आप इतना वेहमेंटली उसको सपोर्ट करें, आई वुड अंडरस्टैंड, दैट्स योर कंट्री, राइट? But that's just a country so far away and who has nothing to do with you whatsoever. ठीक है, so relax, calm down, it's okay. Things like these, I mean, हम बहुत दूर बैठे हुए हैं इससे। Medusa ji, चले I agree with you. I agree with you. Shahji, it has nothing to do with you. It has everything to do with Ishmael and Isaac. Nothing to do with us. We don't even get involved in this. We should not be involved in this. I agree with Medusa. If two cousins are fighting or two brothers and their kids are fighting, it has got nothing to do with us. The whole concept of Ibrahim alayhi salam. Mehta, I'm sorry Please, to Medusa tell ji, you, Medusa ji, Medusa ji, it has something to do Medusa with ji, us. you नहीं are नहीं 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 नहीं, it has देखो not मेहता no जी, no nothing to मेहता do जी, आप with बात us. सुने। Medusa ji, आप I'm हमारे not. साथ It एक is to सेकंड do बात with you. सुने, I'm बात तो saying it is सुने। to It do with does, you. it I'm does. I'm a saying it is to Muslim. do with I'm a you. Muslim. I'm a Exactly. Muslim. That's why I am Jews are my saying it is to do with you. Jews are my cousin Abrahamic That religion. is why I am telling None you. of these Oh my Abrahamic religion word. have anything I to do agree with with you. you. Sir, can I talk, sir, please? I agree with you, Medusa. I agree with you. It has Yeah, got they have nothing to. everything Please, to can do I with Muslims. finish? It has nothing Do to you do with do you, so you you don't always? have to be so Can you emotional please? about it. No, no, I'm not. None of I'm us are not so being emotional. emotional about it. You know, the way Emotion. Rupesh is so Okay. emotional about it. You know, No, Rupesh has been talking about killing I all can see. Muslims over it. I can see. I can see where you're coming I from, mean, there is Medusa. Andolan as well. He's not Medusa, so I emotional agree. about it. Medusa, I agree with you. It has got nothing to do with Rupesh Jha. It has nothing to do with me. Okay, we are from Bharat. It has everything to do between Ishmael and Isaac's kids. You consider yourself Ishmael or Isaac's kids. It has to do with you. So I agree with you. Please don't need to It has blow to off do a steam. lot with Muslims and Jews It has to around the do with world. you. It has You a call lot to do yourself. with the Abrahamic religions around the world. I'm not even saying, देखो मेहता जी, आप मेरी बात को ट्विस्ट ना करो, बात सुने आप मेरी, आप मेरी बात सुने, बात सुने। एक सेकंड, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी, अच्छा ठीक है, आप अग्री कर रहे हैं, गुड फॉर यू। अब आप मेरी बात सुने, शाहजी, ये मेरी क्या? बात सुने। No. I'll get back to Guru Golwarkar. Okay.
What I नहीं said नहीं नहीं was नहीं I what have I to say said was something then you no, can you then you don't can have to. say Mehta No, ji, you you can don't he have to. नहीं नहीं said नहीं No, नहीं you he don't have to. responded. Now she नहीं नहीं responds, नहीं No, and not at then all. you No, no, can no, no, move no. to go The back. grabbing by the next So of look Medusa, all that carry on. under the water, मैं under the bridge, water मेहता under the जी bridge. गोवालकर पे मूव करने से पहले that भाई was मेरे response. no, let me just finish. Let me finish my points and then I'll stay. I'm not running away anywhere. So, Medusa ji, I agree with you. This has to do with the two brothers and the cousins that are fighting amongst themselves. Nothing to do with us Bharatiyas. About the point of Guru we are Golwarkar. not Bharatiyas so yeah. Yeah, of course not. You said it yourself. You are a kid of a child of Ishmael or Isaac. Nothing to do with us, you said, which is fine. Yeah, And that's why I'm we should saying keep that our you mouth don't shut. देखो आप मेरी बात सुनो मेरी बात पूरी सुनो I'm saying फिर वही बात for what I meant for Rupesh was that he does not need to get so emotional about it. That's all I'm saying. ठीक है हम थोड़े से इमोशनल होते हैं हमारा वो मुस्लिम वाला कांटेक्ट है हम फिर भी इमोशनल नहीं हो रहे इतने I haven't seen one Muslim on this panel other than of course Arsalan gets so emotional about it. ठीक है रुपेश You've just झा proved तो yourself. ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे उसने माजल मुझे तो भी एक दो बोल पॉइंट के बस बोलना है। जू बन You've गए just हैं proved so that's yourself my wrong, only Medusa. point. Relax, calm down. ठीक है you don't have to vehemently take a side just because your country have a international I'm not policy. taking a side. I'm not ये taking a मैं तो side. भाई मैं आपको नहीं बोल रही No, यार no, मैं no. आपको So बोल I ही नहीं agree with you. रही Medusa, I agree with you. I've made my point about Ibrahim's kids, Ibrahim alayhi salam's kids. Let's leave it at that. Yeah. About Guru Golwarkar, I Mehta, agree. What Andolan, please, just one moment. Mehta, What there is Andolan ji something said. known as an ideology, Mehta Saab, or ideology You do not. Judeo-Christian. Hold on, listen to me. आपने कि मैं No, बहुत Shaji, I listened to you. I have listened to you. I've चलें जी heard आप what you पहले said. बात So आप can चलें I मेरे please अंदर just make my point about संयम Guru बना Golwarkar? के रखता हूं मैं आप पूछिए। धन्यवाद अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि I am not denying what Guru Golwarkar has written, but this parroting of this whole concept of he was inspired by Nazism. No, just like Andolan said, America, even Russia had influenced go to the red side of the चलें ऐसा thinking, करेंगे कि इसके meaning ऊपर हम रूल please can I, करेंगे no बैठेंगे नहीं आपको देखो आप मैं इसके ऊपर भाई we'll have a deeper conversation. I'm not going गुरुदेव but मोतीलाल नगर की that शाखा से मैं बड़ा हुआ हूँ. जी I जी have तो it lived will be and bred. enlightening for us as well. No, We'll hold the it room doesn't. regards to It is that. it is We irrelevant. appreciate you being here. अगर मैं हमें कोई गलत नहीं आप निकाल दीजिएगा शाह जी I know तो आपसे what एग्री कर Guru रहा हूँ मैं कह Golwarkar. रहा हूँ आपकी शाखा के बारे में Prabhu, ज्यादा पता होगा we'll put that as a carry subject. on. You can have your opinions. मैं तो ओपिनियन दे ही नहीं रहा मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा नॉलेजेबल हैं इस बात में। Shaji you अच्छा guys have to wrap up. मुझे एक नया बम छोड़ना है, अभी छोड़ू कि बाद में? अभी छोड़ Andolan के जी अभी नहीं अभी we're wrapping up तो so अगले we're gonna हफ्ते do के the लिए ये same वाला thing. बम रख ले। हाँ जी फ्राइडे के बिल्कुल लिए रख लें. ऑन फ्राइडे वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट सेशन. उसके लिए रख लें. आज आखिरी बम मेरा ख्याल है मेड्यूसा ने अच्छा मैंने कुछ भी नहीं बोला. जी लास्ट कमेंट्स दे दें जल्दी से. आप 30 सेकंड्स है आपके पास. नहीं फिर मैं कल आऊंगा फिर क्योंकि फिर नाराज ना हो जाए लोग. जी कोई मसला नहीं आप फिर कल चलो मैं क्योंकि सर एक आखिरी बात करना आपने बोला था ना कि जी आपने कहा था कि संडे वाले दिन आ जाना तो मैं आ गया. आज मंडे है. आज तो मंडे है. ट्यूसडे हो गया. चलें कोई ट्यूसडे हो गया. आपके यहाँ हो गया हमारे यहाँ नहीं हुआ. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता था. मेहता साहब को ज्यादा पता होगा शाखा के बारे में. हम शाखा से बिलोंग नहीं करते एंड दैट इज व्हाई वी वुड वांट हिज एक्सपर्ट ओपिनियन अपॉन दैट. व्हाई शुड वी गेट इनटू दैट. लेकिन एक चीज मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि व्हेन अ थियोलॉजी इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड, चाहे वो जितने भी वेस्टर्न लोग हैं वो भी ना इस्माइल से बिलोंग करते हैं ना अब्राहम से बिलोंग करते हैं, लेकिन their theology is based upon that. That is why evangelical Christians are part and parcel of that. Western society as well as the Muslim society is Abrahamic faith. तो ethnically बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं एसोसिएट करते होंगे, लेकिन religiously that connection is there and that just remains whether you are a Christian,
you're a Jew or you happen to be a Muslim, sir, this is going to Acha, affect you. Shaji, this was your final comment, right? That's it. Yeah, because I have to close. अंदोला जी आप अपना final comment दे, फुरकान भाई आप दे, रुपेश भाई आप भी दे दे, और साथ just don't throw any bombs right now. No, Thank you. no worry. I want Shahji's wish to come true. There should be lasting peace between Jews and Muslims in Israel, Palestine, and everywhere around the world. And let's hope for the best. Yeah, so I'll go ahead. Rupesh, you have any comments? Okay, I think I have to make a comment that make, since make you it are, brief. Yeah, you know, go ahead. certain lady is being the part of Ummah. Let her tell that, ask Hamas to surrender and give all the hostages. If you want to connect with them, now go ahead. Thank you very much, sir. चले ठीक है. Thank you very much. मैं एक और बात कहूँगा रुपेश जी, उनका एड्रेस आपको ही पता होगा, हमें बता दें, हम उनको आपकी अर्जी डाल देंगे अपनी तरफ से. थैंक यू. आप हमें ही बोल दीजिए, आजकल हम लोगों के इजराइल और जूस से इतने अच्छे संबंध है, शायद हम ही कुछ ब्रोकर कराते हैं. चले इंशाल्लाह. लेकिन मेरा एक कमेंट है शाहजी. Like I think it was a good discussion, and I would still say it was a sixer by Medusa. और थोड़े से आप लोग थोड़े सेंटिमेंटल हो गए थे, इमोशनल हो गए थे. ना हुआ करें, बम आखिर के लिए रखते हैं हम लोग ना. आंदोलन जी, नेक्स्ट टाइम आप अपना लेके आइएगा. लेकिन यही छक्के अगर क्रिकेट की फील्ड में मार लेते तो एक आध मैच जीत जाते आप लोग. वो काफरों की गेम है, हम नहीं खेलते. जले पर नमक. Anyway, I guess we're going to end the session. Guys, thank you for coming, speakers and listeners. And like and subscribe. We'll come with another session about the Israel and Palestine issue, because it's not going anywhere anytime soon. So see you next time.